कोई बाजा वाला है जी? हैं? कहाँ है? हैं? किसके लिए जगह नहीं है? हम गीत गा रहे हैं, इस जगह नहीं इसके लिए है। मत आ, छोड़ दो। तो बोलो ना साहब, बोलने में तो क्या लगता है? भैया मुश्किल है, आप कोई बात कहते हैं नहीं सकते, छोड़ दो। अभी लोग आ रहे हैं ना, बैठ रहे हैं, सेटल कर रहे हैं, 5 मिनट लगेगा इनको, तब तक आपको हम गीत सुना देते हैं। ये सुलभ का दर्शन है, ये फिलॉसफी है सुलभ। आई एम सिंगिंग फॉर यू, दिस इज फिलॉसफी ऑफ सुलभ। सुलभ तुम्हारे गाए जाए, सुलभ तुम्हारे गीत, सुलभ तुम्हारे गाए जाए, सुलभ तुम्हारे गीत। तुम्ही से उमरी सारी आशा, तुम्ही से उमरी सारी आशा, तुम्ही से उमरी प्रीत, सुलभ तुम्हारे गाए जाए, सुलभ तुम्हारे गाए जाए, सुलभ तुम्हारे गीत। तुमने दिखाई सारी दुनिया, तुमने दिखाई सारी दुनिया, और दुनिया की रीत। छल छद्म से बनी यह दुनिया, छल छद्म से बनी यह दुनिया, राह निकालो जी, सुलभ तुम्हारे गाए जाए, सुलभ तुम्हारे गाए जाए, सुलभ तुम्हारे गीत। छाया है या माया है, या माया की ही छाया है, छाया है या माया है, या माया की ही छाया है। प्राण यह सब सोच रहे हैं कि, प्राण यह सब सोच रहे हैं कि, सारी दुनिया माया है, सुलभ तुम्हारे गाए जाए, सुलभ तुम्हारे गाए जाए, सुलभ तुम्हारे गीत। सबकी अपनी प्रीति अलग है, सबकी अपनी प्रीति अलग है, सबकी अपनी रीत, सबकी अपनी प्रीति अलग है, सबकी अपनी रीत। सभी प्रीति से, सभी रीति से, सभी प्रीति से, सभी रीति से, एक बनाओ नीत, सुलभ तुम्हारे गाए जाए, सुलभ तुम्हारे गाए जाए, सुलभ तुम्हारे गीत। तुम्ही से उमरी सारी आशा, तुम्ही से उमरी
सारी आशा, तुम्ही से मेरी प्रीत, सुलभ तुम्हारे गाए जाए, सुलभ तुम्हारे गाए जाए, सुलभ तुम्हारे गीत। हमने एक संसार बसाया, हमने एक संसार बसाया, सुलभ की डाली प्रीत। हमने एक संसार बसाया, हमने एक संसार बसाया, सुलभ की डाली प्रीत। आओ हम मिल जुल के बनाए, आओ हम मिल जुल के बनाए, प्रीति प्रीति के गीत। सुलभ तुम्हारे गाए जाए, सुलभ तुम्हारे गाए जाए, सुलभ तुम्हारे गीत। तुम्ही से मेरी सारी आशा, तुम्ही से मेरी सारी आशा, तुम्ही से मेरी प्रीत, सुलभ तुम्हारे गाए जाए, सुलभ तुम्हारे गाए जाए, सुलभ तुम्हारे गीत। Thank you. Now hand over to you. Good afternoon, everybody. We are going to start the afternoon session. Some 2 or 3 people want to go urgently, so they have requested me to give them the first chance. So now I call upon Professor Satish Kumar Sharma and Professor Niranjana Bandari. They will be presenting their paper together. Welcome, sir and madam. परम आदरणीय पद्म विभूषित विंदेश्वर पाठक जी, डायस पे बैठे हुए माननीय पैनलिस्ट और डायस से नीचे बैठे हुए सभी शिक्षाविदों, वाइस चांसलर्स और जो फील्ड में काम करने वाले, जो एक्चुअल चेंज लाने वाले लोग हैं, उन सबको मैं उनका अभिनंदन करता हूं। और ये जो प्रेजेंटेशन है, फॉर्मली तो मैंने ये सोचा था कि मैं अर्बन स्प्रॉल को लेकर के जो अनप्लैन्ड अर्बन डेवलपमेंट्स होती हैं और उनके साथ साथ किस तरह की सैनिटेशन को लेकर प्रॉब्लम्स आती हैं, और फिर सैनिटेशन का जो विषय है उसमें क्या क्या हम लोगों को लेना चाहिए। तो फॉर्मल जो मेरा पेपर प्रेजेंटेशन था वो ये था, और साथ ही में मैडम ने भी कुछ मिलता जुलता ही विषय लिया हुआ है, लेकिन इनका फोकस था विमेन के ऊपर। तो ये हेल्थ के एरिया में इन्होंने बहुत कोई कम से कम 20-22 साल काम किया है। तो फिर हमने सोचा कि टाइम को भी देखते हुए और जो एक्चुअल कल से जो बात यहाँ चल रही है उस बात के संदर्भ में ये ज़्यादा उचित होगा कि हम ये पेपर तो जो पब्लिश होगा ही, लेकिन
हम आने वाले टाइम के लिए इनके विभाग के साथ, जहाँ मैं भी कार्यरत रहा हूँ, अब नहीं हूँ वहाँ पे, तो हम आगे क्या प्रोग्राम कर सकते हैं, तो उसके ऊपर थोड़ा सा मैं आप सबका ध्यान दिलाना चाहूँगा। सबसे पहले तो बहुत कुछ कहा गया है और पाठक साहब से पहली मुलाकात 1991 में स्पेन मैड्रिड में हुई थी और प्रोफेसर त्रिपाठी, प्रोफेसर सारिकवाल और प्रोफेसर एसपी श्रीवास्तव, इन सब से, और कुछ ऐसा संयोग हुआ कि हम एक ही होटल में थे तो मिलने का मौका मिला हमसे। लक्ष्मणदा सर, यस, हाँ जी, हाँ जी, वो क्योंकि हमारे विजिटर रहते थे पंजाब यूनिवर्सिटी बहुत ऑफन, तो उनसे वैसे भी मुलाकात थी। तो तब से लेके उसके बाद इनके साथ कुछ प्रोग्राम्स इनके अटेंड किए और बहुत कुछ सीखने को मिला है और आज भी हम सीख रहे हैं। वो तो हम सब कुछ नहीं कर पा रहे जो पाठक साहब करते हैं, लेकिन इतना ज़रूर है कि किसी न किसी लेवल पर एक प्रयास ज़रूर करते हैं कि अगर हम भी छोटा सा भी प्रयास कर पाएँ और उससे अगर छोटी सी भी कोई उपलब्धि हो तो उसको हम धन्य समझते हैं। और मैंने आज तक यही सोचा है कि अगर कोई बड़ी चीज़ नहीं कर सकते आप, तो कम से कम आप अपने लेवल पे कुछ तो कर सकते हैं। सैनिटेशन समाज में अगर नहीं आप कर सकते टोटल सैनिटेशन, तो कम से कम अपने घर में, अपने घर के बाहर और थोड़ा आसपास के घरों तक भी अगर आप थोड़ा बहुत करेंगे तो ये संदेश जो है वो आपकी नेबरहुड में भी जाता है। और मैंने ये देखा है कि दूसरे लोग भी फिर देख कर के ऐसे ही कार्य शुरू कर देते हैं और आपकी पूरी की पूरी स्ट्रीट जो है वो एक स्वच्छ स्ट्रीट बन जाती है। तो चेंज लाने के लिए हमेशा इंटरवेंशंस की ज़रूरत होती है और जिस तरह की इंटरवेंशंस और जिस तरह के एक आविष्कारिक ढंग से इंटरवेंशंस पाठक साहब ने की हैं, चाहे वो लो कॉस्ट सैनिटेशन के लेवल पे हो या स्वच्छ पानी की हो या फिर और तरह के जो कार्य ये कर रहे हैं, जैसे जो एक्सक्रीटा को खाद में बदलना, बिजली में तब्दील करना और बायोगैस प्लांट वगैरह जो इन्होंने इनके वहाँ पालम गांव में जो इनकी प्रयोगशाला में दिखाई देते हैं और हम सब ने देखे हैं, वो एक बहुत ही सराहनीय कार्य है और इसके लिए हम तो क्या पूरा संसार जो है वो इनका ऋणी है। और एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि कल हमारे जो पूर्व प्रधान राष्ट्रपति थे, उन्होंने भी इनके सेंटर को और इनके काम को एक अद्भुत संज्ञा दी है। वो अद्भुत ही नहीं है बल्कि ऐसा है जो अद्भुत इंसान सोच भी नहीं सकता है। क्योंकि मेरे को याद है जब मैंने अपना पीएचडी का काम दलित्स के ऊपर कर रहा था तो बहुत मुश्किलें आती थीं और आपका जो पीयर ग्रुप है वो भी आपको बहुत भद्दे मजाक भी करता है कि क्या काम कर रहे हो तुम, किस पे काम कर रहे हो, क्योंकि उन दिनों में कोई भी स्टडी इस तरह की नहीं होती थी। लेकिन इन्होंने तो जब खुद मतलब मैला को अपने सर पे उठा के ढोया है और बिहार में और फिर एक उच्च जाति के ब्राह्मण होने के साथ साथ ये कार्य करना, तो शायद इनका टोटल बहिष्कार भी किया होगा लोगों ने, लेकिन उसके बाद उन्हीं लोगों ने इनको एक्सेप्ट भी किया है। तो चेंज लाने के लिए कहने का तात्पर्य ये है कि हमको अपने बहुत सारी जो सामाजिक, सांस्कृतिक और जो बहुत सारी धारणाएं हमारे को चेन्स की तरह बांध के रखती हैं, हमें उन सब को तोड़ करके
निकलना पड़ता है। मेरे कुछ अनुभव ऐसे भी रहे हैं लाइफ में कि छोटे छोटे प्रयास, एक किसी सिचुएशन में जब मैं ये देखता था एज ए यंग मैन, तो एक डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में थे कि हमारे जो खाना खाते थे लोग, सोल्जर्स, वो बहुत सारा खाना डाल तो लेते थे, लेकिन किसी ने आधा खाना छोड़ दिया, किसी ने पूरी थोड़ा खा के छोड़ दिया, तो बहुत सारा खाना जो था वो वेस्ट होता था। तो एक दिन मैंने हिम्मत करके, क्योंकि आप सीनियर को ज़्यादा कुछ बता भी नहीं सकते, हिम्मत करके कहा कि अगर यही खाना ये सेव करें, फेंके ना, तो हम इनके लिए कुछ बेहतर कर सकते हैं। हम इनको फ्रूट ज़्यादा दे सकते हैं, एक्स्ट्रा एग दे सकते हैं, इनको मिल्क दे सकते हैं। तो फिर जो कर्नल कमांडर, उन्होंने पूरी सभा बुलाई और सबको ये संदेश दिया, और नेक्स्ट डे एक दाना भी खाने का फालतू किसी ने फेंका नहीं। और उसके नेक्स्ट डे से ब्रेकफास्ट में लोगों को एडिशनल एग मिल रहा था, या फ्रूट मिल रहा था, या दूध मिल रहा था, जो जिसकी चॉइस के मुताबिक। तो ये सारी चीज़ें हैं, और आज हम और हमारा विश्व जो है वो एक्सट्रीम पॉवर्टी में धंसा हुआ है, और ये जो पॉवर्टी है वो इनक्वालिटीज़ और इनइक्विटीज़ के कारण है। और इस तरह के समाज में हम सब का ये दायित्व बनता है कि अगर हम सैनिटेशन को भी एक कंप्लीट सक्सेस बनाना चाहते हैं, तो पॉवर्टी और इनक्वालिटीज़ को भी हमें कम करना पड़ेगा। और दो रास्ते हैं उसके। एक रास्ता है इकोनॉमिक इनक्वालिटीज़ को कम करना, और दूसरा रास्ता जो हमें सुलभ ने दिखाया है वो है कि जो इनक्वालिटी हमारे मन में, हमारे दिमाग में और हमारे दिल में भरी हुई है, उसको हमने मिटाना है। और जब तक वो नहीं मिटती तब तक हम, अगर हम इकोनॉमिक इनक्वालिटीज़ को भी कम कर लेते हैं, तो जो सामाजिक इनक्वालिटी है वो बनी रहेगी। इसीलिए इकोनॉमिक इनक्वालिटी को ख़त्म करने के साथ साथ हमें जो सामाजिक इनक्वालिटी है वो भी हमें समाप्त करने की ज़रूरत है। और उस फ्रंट पर हमें अपने लेवल पर ही कदम उठाने पड़ेंगे। बिना कदम उठाए हम लोग इन चीज़ों को नहीं कर पाएंगे। और दूसरी बात जो मैं कहना चाहता था, जिसके कारण हमने ये सोचा कि मैडम के साथ हम लोग हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी, और बाद में हमने उसमें सोशल वर्क ऐड किया था। और हमारा जो बेसिक पर्पस था सोशल वर्क करने का वो ये था कि समाज शास्त्र में हम लोग सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज प्रदान करते हैं बच्चों को, रिसर्च मेथडोलॉजी सिखाते हैं, रिसर्च कैसे की जाए, लेकिन उनको जो अप्लाइड सोशियोलॉजी है, प्रैक्टिकल सोशियोलॉजी है, जो फील्ड में जा कर के काम करना है, इंटरवेंशंस करनी है, पॉलिसी मैटर्स बनाने हैं, उसके ऊपर हम लोग कोई भी ट्रेनिंग नहीं देते, ना ही हमारे सिलेबस में वो प्रावधान था। तो जैसे आज सुबह त्रिपाठी साहब ने भी बोला कि हमें ज़रूरत है कि दोनों को इकट्ठा किया जाए, और इस संदर्भ में मैं आप सबको सूचित करना चाहूँगा कि हम लोगों ने दोनों का एक ऐसा सिलेबस बनाया जिसमें पहले 2 सेमेस्टर बच्चों को कंबाइंड थ्योरेटिकल नॉलेज प्रदान की जाएगी, क्योंकि बिना नॉलेज के प्रैक्टिकल भी आसान नहीं है।
जब तक एक डॉक्टर को बीमारी का पता नहीं है तो वो इलाज नहीं कर सकता। तो जो सब्जेक्ट में पढ़ाए जाने वाले अनिवार्य चीज़ें हैं उनका ज्ञान देने के साथ साथ जो नेक्स्ट 2 सेमेस्टर होंगे उनमें जो मैक्सिमम जो है वो एक्शन ओरिएंटेड सोशियोलॉजी और सोशल वर्क की पढ़ाई बच्चों को करवाई जाए और उसी के मुताबिक उनको प्रोजेक्ट्स दिए जाएं और कुछ गांवों को अडॉप्ट किया जाए। ये हमारी एक रफ प्लान बना है, वो ये है कि कुछ गांवों को हम लोग अडॉप्ट करके उनकी पंचायत के साथ मिल करके, और उसका उदाहरण हमारे सामने सुलभ है क्योंकि जिस तरह से इन्होंने दूर दूर जा कर के काम किए हैं। कल जस्टिस ठाकुर भी बता रहे थे कि उनके गांव में जो यहाँ से काफ़ी दूर है, अगर वहाँ जा कर के कुछ हो सकता है तो हिमाचल में हम लोग मैं तो नज़दीक हूँ, ये वहीं बैठे हैं, तो कुछ ना कुछ हम लोग ज़रूर उपलब्धि कर सकते हैं। तो इन चीज़ों के साथ मैं अपना वक्तव्य यहीं समाप्त करता हूँ क्योंकि टाइम की भी कमी है, और अगर मैं भाषण अपना करूँ और ये अपना करें तो शायद 1-1 घंटा चाहिए था हमें। तो हमने ये सोचा कि कंबाइन करके इसको जो मूल बात कहनी है वो हम ज़रूर कहें आपसे। इसको यूजी लेवल पे न्यू एजुकेशन पॉलिसी में सोशियोलॉजी ऑफ सैनिटेशन का एक पेपर कोर पेपर डाल देंगे सर अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में सर। जी सर। जी सर। हाँ न्यू एजुकेशन पॉलिसी में सर हम इसको सोशियोलॉजी ऑफ सैनिटेशन को कंपलसरी पेपर रखेंगे सर। अभी हम पॉलिसी बना रहे हैं सर, सिलेबस बना रहे हैं सर। थैंक यू सर। चलो सर। Thank you very much. Okay. Yeah, whose specs is this one? Yes. Sharma ji's, I think. Don't forget your specs and the papers. So wish you all the best. My friend is there. Yeah. Thank you. Yeah. Thank you, Professor Sharma and Madam. Now next I call upon Dr. Y. Avinindranath Rao, and he is originally from Mangalore, and now he is working in New Delhi as a Library Information Officer, Ministry of Culture, and he happens to be brother of Dr. Y. Ravinath Rao. आदरणीय डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक जी, प्रोफेसर नील रतन जी और एमिनेंट प्रोफेसर्स जो चेयर कर रहे हैं आज का सेशन में, सबको मेरा नमन है। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू
प्रोफेसर बिंदेश्वर पाठक जी और प्रोफेसर नीलरतन जी और ऑर्गेनाइजिंग कमेटी जो मुझे आज मौका दिया है मेरा भी एक विचार रखने के लिए, थैंक यू। मेरा पेपर का विषय है वेब बेस्ड इंफॉर्मेशन सोर्सेस इन द फील्ड ऑफ sanitation. Web has important role in providing access to information sources in varied discipline. The library and information science professionals are more familiar with the e-information environment by procuring, organizing, accessing, and disseminating various information sources as per requirement of the clientele. In his study on information democracy, Jagatar Singh observed that the internet and the web in the information communication technologies have made the world a global village. Library and information science professionals have their active role to customize and optimize access to the resources available in the web. Electronic environment has enabled the user community to have access to www internet. Web has enabled globalization of education and made it possible with the e-learning and e-education by bringing all the learners on a single platform. Each web resources have their own global significance. The advantage of web resources is international reach, convenient, searchability and linkage. They are space saving, enhance the speed of communication. Sanitation refers to public health conditions related to clean drinking water and treatment of disposal of human excreta and sewage. Preventing human contact with the faces is part of sanitation. मैं इसका डिटेल ज़्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ, आप सबको मालूम है। और मैं मेरा पेपर का रिलेटेड और आगे बढ़ना चाहता हूँ। Web resources have enabled in creating awareness about sanitation issues and growth of sanitation disciplines. This has helped in gathering updated information sources regarding sanitation. Sociologist B.K. Nagla, in his work on Sociology of Sanitation, has stated that sanitation connection is an internet-based resource intended to facilitate access to information on sanitation. According to Tarif Ashraf, the new ICT applications and content relevant in the demand in rural areas can improve the delivery of information-related services to people in general and provision of health and social services in rural areas in particular. There are different types of web resources. They have their own needs and functions. Types of web resources include websites, email-based information services, online directories, virtual online conferencing, e-journals, e-books, online learning and online classes, portals, virtual help desks, mailing lists, online bookshops, etc. I have identified, there are many web resources, some 25 resources I have identified. I name only few due to the time constraints. For example, for open directories, there is www.worldbank.org, swachhbharat.mygovernment.in, or sanitation database. There are numerous databases available in the web. For example, washdata.org, sanitation and world water for all.org, swachhbharatmission.government.in, और e-journal in sanitation, इसमें भी बहुत सारा resources available है. मैं कुछ कहना कहेंगे तो sciencedirect.com, cleanindiajournal.com, और sanitation institutions. Many institutions offer courses and research facilities in the field of sanitation. उसमें भी आपको www.niccr.in, washacademy.org, washinstitute.org, और हमारा सुलभ www.sulabcenter.org, ये सारा some of the resources available. अंत में मेरा findings and concluding comments.
The World Wide Web is highly useful in getting information of various subjects and fields, including sanitation. It also includes various images that are shared over the internet. This paper explores various web resources that are generated in the area of sanitation for dissemination of information. For communication, World Wide Web has made internet a paradigm in global communication. This study suggests that there is also a need of establishing a library and information center for sanitation and its allied subjects to integrate all the information sources, including web resources for the benefit of user community, researchers and policymakers involved in sanitation endeavors. As a result of World Wide Web, necessary information on sanitation, noted sanitation-based NGO like Sulabh organization and its activities are readily available. This will further help in promoting the discipline of sociology of sanitation and action sociology at a global level. Thank you. No, doesn't matter. It's a pleasure. Thank you, Avanindra Ranath Rao. Now next I call upon Dr. Sumit Saurav Srivastava. Come. And Sumit Saurav Srivastava is from Allahabad University and is a very bright scholar. So we are expecting a learned paper from him. Welcome. Respected dignitaries on the dais and august audience, I am Dr. Sumit, and on personal note, I often see myself as a Lord's lost ship who, by the grace of God again, Dr. Neil Ratan sir and Professor Richard Pius have kept me on track. And whatever I say today and whatever I elaborate upon anything to do with sociology of sanitation or what all activities Sulabh International has taken up under the visionary leadership of Professor Bindeshwar Pathak, sir, I owe it to you all. Let me begin with a very rhetorical issue. What do we understand by university? And in the morning, we have had a very brief deliberation upon university, that university stands for humanism, university stands for knowledge, university stands for compassion. But at the same time, university goes beyond the syllabus and takes into some of the areas of academics or some of the areas of social issues which may not have been included in, say, quote-unquote academic disciplines of social sciences, sociology, or for that matter, any other discipline. I think it is high time that sociology of sanitation should be and must be included in academic and research institutions across the countries, and more particularly in India, as we have a very pressing need of sanitation as an equity issue, sanitation as a justice issue, and sanitation as a human rights issue.
And I am sure that deliberations on this issue for over, say, 2-3 days will make sanitation again an important thing. Now, in the morning itself, again, we had a brief comment upon the sociology of sanitation as a interdisciplinary or multidisciplinary subject or theme of study or topic of academic deliberation. To my humble opinion, I have simply jotted down some of the basic issues. I think we are quite clear that when we say about sociology of sanitation, definitely it involves sociology of sanitation. But let us proceed a little further. When we enter into the realm of laying down the pipes for the purpose of sewerage and other issues, we enter into the discipline or subdisciplines of civil engineering, human geography, urban planning, and for that matter, town and city planning. The second issue would be when we look into environmental sanitation or eco-sanitation, of which Sulabh's stupid toilet is a classic and a unique example, we enter into the realm of environmental science and environmental studies. When we enter into the laws and policies pertaining to the sanitation, we enter into the subdiscipline of something called political studies, policy studies, public policy studies, and to some extent, law and governance. When we enter into, say, something to do with caste, manual scavenging, and the attitude related to dirt and garbage, we enter into something called sociology and social anthropology of dirt, sociology and social anthropology of garbage, and sanitation as we move forth. And last but not the least, when we incorporate women issues or gender issues within the sociology of sanitation, we enter upon a very fascinating, vibrating subdiscipline, something known as women's studies and gender studies. To which we can add upon something called, when we look upon some of the basic human initiatives taken by Sulabh International, when we talk about toilet as a tool of social liberation, when we talk about toilet as a tool and technology of, say, empowerment or social equity or social justice, definitely we touch upon a very problematic issue which our esteemed speakers have time and again pointed out, that to look into the caste dynamics, how the issue of untouchability, how the issue of caste marginalization and exclusion takes place within the sociology of sanitation. And in there, we enter upon something called exclusion studies, and we look into how caste dynamics operates in sociology of sanitation. So these were some of the disciplines or sub-disciplines which I thought upon to look into. Now, the second issue would be how to elaborate upon what we can say sociology of action or action sociology, and to interlink with something called sociology of sanitation. When we talk about action sociology, we move forth books, written texts, theories, and concepts, and what we intend to do at that point of time is to integrate those theoretical and conceptual tools and techniques within the realm of practice. And I think that is where the discipline of social works comes very handy. Now, what happens is that we take up a theoretical issue or stand, and then we tend to apply that across the society and look into it, how does it make sense? So in that way, if we can look upon something called, say, bringing something called toilet within the academic and public discourse, I think one of the most unique contribution of Sulabh International in general and Dr. Bindeshwar Pathak in particular is to bring toilet into the academic discourse, public discourse, and most importantly, at the global and international arena. It is so because we really need to look upon the issue of dirt, danger, purity, and impurity, these kind of attitudes or perceptions related to or associated with toilet and sanitation. And that is something we really have to appreciate and take note of it.
Now, let me see how it works. See, it took very long time for European sociology to understand that there is something called South Asian sociology, Indian sociology, Canadian sociology, or for that matter, any other sociology. And when we enter into something called sociology of India or Indian sociology, it took them very long time to enter into or arrive at something called caste studies, Dalit studies, women studies, or tribal studies. But we do have paper on social exclusion, marginalization, sanitation, sociology of health and hygiene. Now, it's a very humble request. Whenever you look into any of the syllabus, you will not find something called toilet in that. And it is very surprising because that is one thing which we come across on our day-to-day basis, and from there upon the caste and caste system discourse takes place. So the centrality of toilet within the discourse of health, hygiene and sanitation is something which is a very unique contribution. I'm sure that we all have had a tour or visit of Sulabh Museum of Toilets. And it's a fascinating story of what we can say, how the humans or the humanity has come across looking for a safe, hygienic, and inclusive hygienic solution towards toilet. And that is where I think something called history of sanitation or ecology of sanitation also takes place. So if we have a very brief survey of some of the disciplines or sub-disciplines or subjects or specializations as they may stand to be, are related with sanitation, they are really, really very expansive, and they are very huge. Now, what we are supposed to do as an academician when we interact with the young students, or for that matter, the students of the contemporary society or community, we need to make them aware or sensitize them that sanitation is a very crucial element of human beings, healthy human beings, or for that matter, humanity at large. And this was something which I thought of looking into. And last but not the least, when we talk about, as we have witnessed yesterday, that how Sulabh International responded to the urgent need of widows of Vrindavan, and it also responded to the age-old, what we can say, a problematic issue of caste, manual scavenging, and untouchability. We really have to appreciate how toilet can become really a tool of liberation and social justice. The logic is very simple, but at the same time, it's very complicated. See, the absence of sanitation or toilets, or for that matter, the presence of dry latrine results into the subhuman or inhuman practice of night soil carrying. This is the first argument. Second, entry of the Sulabh two-pit flush toilet, and gradually the dry latrines are replaced, and subsequently the communities in particular, because of the historical disadvantage, have been engaged in this practice, are over a period of time weaned away, or for that matter liberated. And that is where the toilet of the Sulabh toilet becomes the tool of liberation, becomes the tool of social justice, becomes the tool of social equity. And if you wish to elaborate upon how caste and manual scavenging and the untouchability operates within the framework of something called caste and caste system, maybe just a few lines in Hindi would be enough. It goes something like this. In the morning, our honorable former Vice Chancellor sir was saying how caste needs to be addressed. It's something like this. What was that? Something goes wrong. What? I just forgot. No, it's over. It's just water. It goes like this. मुझे प्यार करती एक ऊंचे जात की लड़की,
बेवकूफ़ है, नासमझ है, मूर्ख है, चूँकि उसे यह नहीं पता साथ जीने का तो छोड़ो, हमारे मुर्दे भी साथ में नहीं जलाए जाते। It, 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 no, it simply brings out how caste operates within the sanitation framework. See, the inhuman practice of carrying the night soil, the inhuman practice of cleaning and carrying the dry latrine itself attests to the fact the huge impact Sulabh International has on the operating of caste system. And with the coming of two-pit toilet technology, how hundreds and hundreds and thousands, I think that, sir, the figure runs into crores and crores of the latrines being converted into Sulabh is something which has really has resulted into something called a social revolution. And that is where sanitation as a social movement and social movement of sanitation emerged in 1970s to look into and address the issue of sanitation. I think these were some of the things which I thought of bringing to your kind attention to the August gathering. And really, I'm very much thankful to you all for giving me such an opportunity. Thank you, sir. Thank you, Dr. Sumit, for your nice presentation. Now I call upon Professor Anil Kumar Singh Jha to present his paper. Professor Anil Kumar Singh Jha hails from the land of Dr. Bindeshwar Pathak, that is Bihar, and is the professor of Central Gaya University. Welcome, sir. Good afternoon, respected Honorable Pathak ji, Richard Paes sir, Neil Ratan sir, Anil Vaghela ji, and other dignitaries sitting on the dais and off the dais, and of course the participants of this seminar who are the resident directory of this academic event. Well, at the outset, let me thank the organizing committee to give me an opportunity to interact with you. And of course, I'm supposed to share with you right now the journey of sociology of sanitation during 2013 and 2023. So I'm going to discuss something related to a journey of a decade of sociology of sanitation. Of course, I was also part of the first National Conference of Sociology of Sanitation, which was held in 2013. And right now, we are participating in 2023. So this is how we are going to discuss. Well, if we start with the issue, in the beginning of the new year, we all have witnessed number of news items which was related to Josimath. The print and electronic media, they went on showing the number of things related to cracks on the roads, cracks on the walls pertaining to Josimath. Of course, the media personnel, they shown rightly because of the TRP and other purposes, the cracks of the walls. But we, the social science students, are supposed to see the cracks pertaining in the society. And it proved that, yes, development is not in every case considered as panacea for the development.
development should necessarily be in close connection with the norms, patterns, values of the society. It should be in tune with the environmental requirement of the particular area. It is not always that development at any cost. Of course not. There is nothing like one-size-fits-all policy so far as sanitation is concerned or environment is concerned. If we talk about the pertaining issue of the sanitation, as we all know that if we come across the latest data of NFHS 5, when it was asked that only 70% household, they are having access to purified water. I mean, only in 70% household, they are able to get the water which is purified. And of course, it is a matter of pleasure that in NFHS 4, it was just 49, so there is improvement in the data, but still it is not satisfactory. So far as another information is concerned, as we all know that sanitation issue is not the way we consider it. It is not so easy. And of course, we all know that in the world around, the diseases related to sanitation claims more lives than the gun claims the lives. So it is not simply related to that we are supposed to ignore it. While driving, we come across a number of times a message clearly written on the side glass of a mirror that objects in the mirror are closer than they appear. I repeat, objects in the mirror are closer than they appear. In the same way, negligence of sanitation seems dangerous than it appears. Generally, it is not visible. We are habituated of ignoring a number of things, but it is not so. And another issue related to sanitation is that it is not simply related to medical science. It is not simply related to money. In his magnum opus, Asian Drama, Gunnar Myrdal clearly talks about that sanitation issue is not simply related to scarce of resources, but it is related to lack of awareness. So it is not if we consider that it is simply that we are not able to afford or it is simply related to economy, it is not like that. It is totally based on the lack of resources, which we keep on talking about these days, that how our social intervention and how we are supposed to place it in society, and that's why we, the students of sociology, are discussing the issue. So far as sociology and sanitation is concerned, of course, in Marriott, clearly written in the, wrote in 1896 in American Journal of Sociology, Sanitation and Sociology. That was the beginning of the mixing between the sanitation and sociology. But we, the students of sociology, talk about Thomas Kuhn's paradigm shift. So 2013 was a paradigm shift when Honorable Pathakji introduced the Sociology of Sanitation in National Conference. Of course, we all know that he was well involved as action sociologist in action aspect of the sociology. But the nomenclature, Sociology of Sanitation, that's why it is not that he is simply considered as father of Sociology of Sanitation, but he also gives the motherly treatment to the nurturing of the Sociology of Sanitation. That's why we every time keep on witnessing his active involvement. We may keep on thinking those who are participants staying in different hotels, they think of that we have to start early in the morning at night hour at the 9, and again we will come back at 9. And we are witnessing that Honorable Pathakji is also in every moment he enjoys, because he knows that how to nurture a discipline. Introducing discipline is one thing, and nurturing the discipline is another thing. So Sociology of Sanitation, it started in 2013, the same national conference, number of participants from different parts of India, they were there. And in that, the father of sociology introduced the term Sociology of Sanitation. The definition is clearly given in that, and you will find that my full article is already there in the abstract book. So definition and other details you may easily go through, those who are interested in that. After that, when he introduced, perhaps Honorable Pathakji is influenced by W.B. Yeats' statement that education is not the filling of a pail, but the lighting of a lamp. So Honorable Pathakji ignited the minds of the sociologists across the India and the world that yes, sociology is deeply related to sanitation, and sanitation and sociology cannot be compartmentalized. These two are interrelated.
if we have to understand the society, we cannot ignore the sanitation and related aspects, because sanitation is not simply related to cleanliness, but caste, gender, number of other issues are related, which all these issues are clearly mentioned as theoretical aspect we discuss in the classes we teach as a teacher, we learn as a student, but there is an urgent need of connecting these two things. So he ignited the minds of the sociologists everywhere, and in that way, it started the journey in 2013. After the completion of the national conference, the workshop was organized where the scholars of repute, they were there, and the number of textbooks were written. Richard Pius Sahab, Vaghela ji, Nagala ji, Ashish Saxena ji is there. Number of scholars, they wrote the books on that, and after that, number of books have been written on sociology of sanitation, action sociology. So that was just as the paradigm shift is started. Then again, it was the need of introducing the subject in different universities. So it was introduced, and fortunately, we all know that today we reached to 25 universities. Spread of, as we all know that we the students of sociology, we know that the spread of sociology was itself very slow. Spread of sociology in India was very slow, and compared to that, even during 10 years, spread of sociology of sanitation compared to that is very fast, that in just 10 years, it reached to 25 universities. And not only it's just simply that it reached to 25 universities, but such action, such activities compelled those who were the planners of the national education policy, that they used 5 times the term sanitation in the national education policy 2020. And those who are aware with the national education policy, in the first national education policy in 1968, there was no term like sanitation. The second national education policy, 1986, there was no term called sanitation. But in third national education policy, 2020, there are 5 times they use the term sanitation. It not only indicates that effort made by in the field of the sociology of sanitation, but across the world, across the academia, the term is realized that yes, we are supposed to understand the importance of sanitation. So the books were written, then the other number of other steps were taken by the Honorable Pathak ji, that it spread the message. Then number of programs were taken in Delhi, Gujarat, Bihar, Karnataka. Number of conferences were held related to sanitation, so that number of students, number of faculty members should get the benefit of these conferences, and they should also come to know that, okay, there is one special branch called Sociology of Sanitation, so they will come to know regarding that. Then it was also realized that sometimes the faculty members would also be trained. So as you all know that most of the universities they are having the HRDC, Human Resource Center of the university, where the newly appointed faculty members are being trained. So more than 5 or 6 faculty development programs, number of lectures were given on sociology of sanitation, just to inform others, the newly appointed faculty members of different Indian universities, that there is one branch called sociology of sanitation, and if they start realizing the importance of sanitation, perhaps they will spread the message of sociology of sanitation also. And then, of course, I myself developed 10 courses on sociology of sanitation, different aspects of sociology of sanitation, and it is for the Swayam Prabha channel. So as per the schedule, the Swayam Prabha channel will telecast it, and once as per schedule they will telecast it, then it will be in the public domain for free. It will be available on the YouTube channels. So 10 lectures of sociology of sanitation were also developed as part of the sanitation. Because why we all know that the importance of sociology of sanitation is that it touches upon all the issues related to sociology. For example, if we talk about sanitation, it is closely related to caste. Of course, caste simply, as just mentioned by him, that it is not simply we are supposed to go beyond the homo hierarchicus, we are supposed to go beyond the purity, impurity, we are supposed to go beyond that ludima, beyond the sacred and profane of Emile Durkheim. But at the same time, we are supposed to actually know the meaning of the Verstehen explained by Max Weber. We all know that Max Weber talks about the Verstehen, that, well, Verstehen means placing ourselves to others' position to know the ground reality.
For others, those who are not from sociology background, when they see the picture of Honorable Pathakji with that carrying the night soil, that may be a picture, but we, the sociology student, can understand that, well, Verstehen goes beyond that, placing ourselves to know the ground reality. Perhaps that was the step taken by Honorable Pathakji to know the feelings of, that is known as empathetic understanding, that, well, how do they feel? So simply the Verstehen is not for the learning that, yes, it's a theory, but we are supposed to learn that we can also place ourselves to understand, and in that particular way, only then we can understand that how sanitation is closely related to caste factor also. And when we talk about the caste factor, we are already understand that how caste factor, Usha Chaumarji is sitting there, that how can a caste can be converted to this particular fact, to that particular fact. Same way as caste is related to that, we should feel that at empathetic understanding, and we have, as part of our tradition, we are having number of thoughts related to, for example, Atmavat Sarva Bhutesu. We are supposed to understand that if they cannot do anything, or we think that I will not do that, number of times there is a message of the railway station, आप जिसकी ओर देखना नहीं चाहते हैं, आप ही की तरह कोई आदमी उसको छूता है या उसकी गंदगी को साफ करता है. This is just the message that do not spread the dirt and etc. So we are supposed to learn that how is caste related to sanitation, which is closely related to sociology. Same gender and sanitation, but of course my tomorrow's session is dedicated to gender and sanitation, so I will touch upon that issue at then there. Simple logic is that we are having a number of tradition related to sociology of sanitation, whether it is Chanakya's Arthashastra, whether it is the historical aspects, or even in our culture. It is not like that after the arrival of COVID-19, we started using that wash your hands, wash your hands. We are having number of traditions, even the taking food we are having, and we go beyond the MDG and SDG, that external cleanliness, we go beyond that. We think about that internal purity, external purity. We think about the mansa vacha karmana pavitrita, which goes beyond simply the external purification or external cleanliness. So we are simply supposed to realize, we are simply supposed to pay more attention to values compared to valuables. Unfortunately, we pay attention on valuables, and sometimes valuables means material things. Valuables may create problem for environment, but if we concentrate on values, it may be useful for not only sociology of sanitation, but for ourselves also. And when we think that ourselves, it should be, sometimes what happens, we are very smart. Of course, smartness is always good, but we are not supposed to be over smart. What we do, unfortunately, we think that this is my area, this area should be cleaned, and I will throw the garbage and other things to that area. But environment is not like that. If we throw garbage in that area, we are supposed to be influenced by that. And again, if we talk about the sociology, as a student of sociology, we know that we are having the dramaturgical analysis of Erving Goffman. He talks about the front region and back region. So front region means the so-called, in normal word, we can say that formal life, and informal life is back region. We are very careful that, okay, I am being observed, so I will maintain that purity, I will be use dustbin, etc. But the moment we enter into the back region of the Erving Goffman or informal life, we just change our behavior. So we are supposed to understand that what we expect from others, or what we think that, well, in formal life, what we are doing, in off the record or when we are not in public place, we are also supposed to maintain the same dignity. We are also supposed to maintain same thing. And in that particular context, we should know that, yes, we are supposed to do all those things that we can. And it is not only necessary for us, but it will be helpful for our society also. Here,
when we teach sociology of sanitation in class, as we all know that we keep on thinking about the values, because the number of values are there in the society, and that is the base of the sociology of sanitation, that how can we attach values with the study, only then it will be not only helpful for the employability and other things, and that we are supposed to practice in our lives also. For example, when we are roaming around the classes and other things, we are supposed to off the lights. We are not supposed to throw anything here and there. At the same time, when we are submitting the assignments, when we are getting the assignments as a teacher, we are not supposed to get assignments in the transparent file or the plastic cover, because we are supposed to understand that students are supposed to get marks on the content, not on the types of the assignments or the file or folder. In that way also we can save the environment. These are some of the issues which we can help, and of course, when we teach, for example, in our university, one of the 25 universities which are listed here, we offer Sociology of Sanitation as a core course, that is as a vocational course for the sociology students and social work students. So we are supposed to do the practice. And when we say that we are supposed to do the practice, we should learn. You might have observed this year, and every time Sulabh is habituated of showing that great gesture, that the way Vice Chancellor was facilitated, the same way even the faculty members and students, they get the same type of gesture. This is not simply that we should learn. Here, as a student of Sociology of Sanitation, what we see there, that juncture, that gesture we are supposed to learn, and that gesture we are supposed to imbibe in the personality traits. It is not simply that for the sake of doing that Honorable Pathak ji is doing. We should learn that there should not be discrimination at any layer. When you learn that there should not be any discrimination, you are also supposed to say the same thing. Only then we as a teacher will teach the students. There should not be any gap. There should not be any inimical or polemical relation between students and teachers. Unfortunately, these days it is emerging that, well, I am at this particular post, I should not carry forward this. And we are having wonderful that suggestion that is there in the Taittiriya Upanishad, and it says, Sahana vavatu sahanov naktu sahviryam karvavahe tejasvinavadhitamastu mavid vishavahe, unquote. It clearly says that there should not be any inimical relation between the teachers and taught. Suppose so that gesture we should learn that there should not be any hierarchy, only then we can spread the message of sociology of sanitation, because the students will learn that it is not only helpful for my employment angle, but it is also helpful for my gesture, my personality traits, and wherever I will go, that will be. So students are supposed to learn that we should imbibe the sanitation sensitive behavior in my personality traits that will be helpful for them throughout the lives. Well, remaining things I am supposed to speak in other two sessions also. We will discuss. I am supposed to complete tonight. And finally, a note to all those who are there for learning the sociology of sanitation, as we keep on talking about the Mahatma Gandhi. So as he rightly suggests, you must be the change you wish to see in the world. Thank you. Thanks a lot for your patient sharing, and thanks a lot for giving me opportunity.
Thank you very much, Professor Anil Kumar, and he has given a bird's eye view of the growth of sociology of sanitation from 2013 to 23. Next, I call Dr. Rajiv Gupta to deliver his paper. मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा प्रोफेसर नागला का और प्रोफेसर नील रत्न जी का कि उन्होंने मुझे पहली बार इस तरह के डिस्कोर्स में पार्टिसिपेट करने का मौका दिया। और इससे ज़्यादा अच्छी बात यह है कि डॉक्टर विंदेश्वर पाठक जी का जो पर्सनैलिटी है, उस पर्सनैलिटी से मुझे पता लगा कि, और मैं तब से मूल्यांकन कर रहा हूँ सर 2 दिन से यहाँ पर, कि एनलाइटनमेंट की लीडरशिप क्या होती है। कहीं पर भी नव जागरण होता है तो उस नव जागरण का नेतृत्व करने वाले लोगों की विशेषताएं क्या होती हैं। मैं सर आपको प्रणाम करता हूं कि आपने मुझे ये अवसर दिया है। प्रोफेसर रिचर्ड पाइस से मेरा बड़ा पुराना रिश्ता है। ISSA के अंदर मैं एक बहुत सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में काम करता रहा हूं और प्रोफेसर रिचर्ड पाइस हम लोगों का जो जर्नल है उस जर्नल को एक बड़े लंबे समय से एडिट करते रहे। मैं अपने नए दोस्तों की बात सुन रहा था, सौरभ की बात सुन रहा था, अनिल की बात सुन रहा था। मैं सर एक नए डायमेंशन की तरफ आपको लेकर के जाना चाहता हूँ। सोशियोलॉजी ऑफ सैनिटेशन केवल सैनिटेशन के कंसेप्ट से ही जुड़ा हुआ नहीं है। जैसा आपने अपने सेमिनार का, अब कॉन्फ्रेंस का जो टॉपिक भी रखा, उसमें हेल्थ भी है, उसमें हाइजीन भी है, उसके अंदर क्लीनलीनेस भी है, और अब उसमें एक सोशल हेल्थ का कंसेप्ट और जुड़ जाता है। और इस तरह से इन सारे कंसेप्ट्स का जो इंटरडिपेंडेंस है, वो इंटरडिपेंडेंस हमें सोशियोलॉजी ऑफ सैनिटेशन को एक सब सोशियोलॉजी के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश करता है। तो एक ऐसी ब्रांच बनी है नाउ विच पजेसेज एन ऑटोनॉमस कैरेक्टर। और ये जो ऑटोनॉमस कैरेक्टर है, ये ऑटोनॉमस कैरेक्टर किस तरह से सस्टेन हो, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। मैंने बहुत सारी चीज़ों को इसमें देखने की कोशिश की और मुझे लगा कि जिस तरह से हम सोशियोलॉजी ऑफ सैनिटेशन को एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव की तरफ ले जा रहे हैं, शायद आने वाले टाइम में डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक जी को एक्शन सोशियोलॉजी के साथ साथ सोशियोलॉजी डैश इन डैश एक्शन, सोशियोलॉजी इन एक्शन के प्रोपोनेंट के रूप में भी देखने की कोशिश करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ अब पूरी सोशियोलॉजी एक्शन में है, केवल एक्शन सोशियोलॉजी नहीं है। द ऑल कंसेप्ट्स, कंसेप्चुअल कैटेगरीज, थ्योरेटिकल प्रीमाइसेस, एवरीथिंग इज नाउ इन द प्रोसेस ऑफ एक्शन। आपका मैं कल जब वो देख रहा था म्यूज़ियम, सर मुझे लगा कि उस म्यूज़ियम के अंदर एक कोशिश और भी की जा सकती है, और वो ये कोशिश है कि हिंदुस्तान के अनेक राज्यों में और यहाँ के केंद्र शासित प्रदेशों में जो लोक संस्कृति है, उस लोक संस्कृति में, इंडिजीनस कल्चर में सैनिटेशन के, क्लीनलीनेस के, हेल्थ के इश्यूज़ को लेकर के क्या लोक कहावतें हैं, क्या लोक गीत हैं, क्या लोक कहानियाँ हैं, क्या उसके माध्यम से हम जनता की उस चेतना को जान सकते हैं जिस चेतना के अंतर्गत वह उस
पर उस पूरे के पूरे संदर्भ को तलाशने की कोशिश करता है। अगर ये सोशल टेक्नोलॉजी का म्यूज़ियम आपके इस म्यूज़ियम का हिस्सा बनेगा तो हम सोशियोलॉजी के विद्यार्थियों को उसमें बहुत कुछ फ़ायदा हो सकता है। ये मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है। जो आपने जो रिफॉर्म किया है, मैं यहाँ पर श्रीनिवास के संस्कृतिकरण की प्रक्रिया का उल्लेख नहीं कर रहा, क्योंकि वो अपने आप में एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रोसेस रहा है, लेकिन उस इम्पोर्टेंट प्रोसेस की अपनी वीकनेसेस थी। पर आपने जिस तरह से ये जो रिफॉर्म किया है, यह रिफॉर्म मुझे लगता है कि मेरे को ये भी बताता है कहीं ना कहीं कोशिश करता है कि नाउ अनटचेबिलिटी कैन नॉट बी कंसीडर्ड एज ए सिन। इफ एनीथिंग हैपन्स देन अनटचेबिलिटी विल बी ए क्राइम। और उस तरह से आपने जो एक मूव किया है और उस मूव के साथ में कास्ट की रिजिडिटी को तोड़कर जो कास्ट डायमेंशंस में डायनामिज्म कैसे हो सकता है, और मैं तो कास्ट के बियॉन्ड जाऊं तो मैं ये कह सकता हूं सर कि किस तरह से सबऑर्डिनेट सिटीजनशिप को एनलाइटेंड और रेस्पॉन्सिबल सिटीजनशिप में कन्वर्ट किया जा सकता है। अगर इस पूरी प्रोसेस को हम देखते हैं तो मुझे लगता है कि सिटीजनशिप के नए डायमेंशंस हमें इस तरह के मूवमेंट से देखने को मिलते हैं। एक बात और मैं यहाँ पर सर बात कर रहे थे प्रोफेसर श्यामलाल जी, मुझे लगा सर कि हमको फूले को भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। ज्योतिबा फूले के साथ गांधी, अंबेडकर, और अगर हम भगत सिंह के आखिरी दौर के दस्तावेज पढ़ें जिसमें कि वो अनटचेबिलिटी के ऊपर प्रहार करते हैं जेल के अंदर, और जिस तरह से वो रोटी लेते हैं उस व्यक्ति से जो व्यक्ति वहाँ पर कोई और काम कर रहा था, तो मुझे लगता है कि स्वाधीनता संघर्ष के अंदर ये जो विभिन्न धाराएं हैं, उन विभिन्न धाराओं में से अनटचेबिलिटी के खिलाफ, क्लीनलीनेस के पक्ष में और सोशल रिफॉर्म्स और सोशल ट्रांसफॉर्मेशन के संदर्भ में जो चीज़ें उभर कर के आई हैं, उनका कहीं ना कहीं छोटा मोटा एक दस्तावेज हमें नज़र आता है आपके अपने उस क्लीनलीनेस के कंसेप्ट में, सैनिटेशन के कंसेप्ट में। एक ये पार्ट हमको देखने की ज़रूरत है। मेरा एक रिक्वेस्ट आपसे और है सर, हाउ कैन वी सस्टेन दिस डिसिप्लिन? And in my opinion, sir, this sustainability is possible only by giving importance to theoretical constructions also. Action is necessary. Action is indispensable. But when we talk about any discipline, the survival of the discipline for a longer period is possible only when theoretical constructions prevail. और यही बात आप कह रहे थे कि सैद्धांत की हमारे उसमें होनी चाहिए। मैंने पूरा जो मेरा अपना लेख है जो कि प्रकाशित हुआ है, सैनिटेशन इन थियरी ए क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग, उसमें मैंने उन्हीं सारे स्कॉलर्स को, जिन स्कॉलर्स ने बात की है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सैनिटेशन के इश्यूज़ को लेकर के, क्लीनलीनेस के इश्यूज़ को लेकर के, उनको मैंने इसमें शामिल करने की कोशिश की है। और इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो मैंने वॉल्टेयर से शुरू किया है कि उनके अपने आइडियाज़ में किस तरह से, वॉल्टेयर वाज ए फ्रेंच स्कॉलर, और उन्होंने जिस तरह से क्लीनलीनेस और सैनिटेशन के पार्ट की तरफ हमारा ध्यान दिया है, ध्यान आकर्षित किया है। इंडिविजुअल रैशनलिज्म की बात करते हुए वो रैशनल कलेक्टिविज्म की तरफ आते हैं, और उस रैशनल कलेक्टिविज्म में फिलॉसफिकल स्केप्टिसिज्म को तोड़ते हुए उनका अपना मानना यह है कि हमारी अपनी थॉट प्रोसेस में जो क्लीनलीनेस है, हमारी थॉट प्रोसेस के अंदर जो अंडरस्टैंडिंग के मोड्स हैं, उन अंडरस्टैंडिंग के मोड्स को इनके साथ में जोड़े जाने की ज़रूरत है। और वही एक पार्ट था वॉल्टेयर का जो कि क्रिश्चियनिटी के, चर्च के खिलाफ खड़ा हो जाता है और एक नई तरह की फ्रीडम का कंसेप्ट हमारे सामने निकल करके आता है। तो हमें उस वॉल्टेयर को देखने की इसमें आवश्यकता है। वॉल्टेयर के अलावा मैंने इसमें क्लासिकल सोशल थिंकर्स को शामिल किया है। मार्क्सिस्ट स्कॉलर्स किस तरह से क्लीनलीनेस के सवाल को
सैनिटेशन के सवाल को देखते हैं, फ्रेडरिक एंगल्स ने जब अर्बनाइजेशन की प्रोसेस का मूल्यांकन किया है तो अर्बनाइजेशन की प्रोसेस की अंदर वर्किंग क्लास के जो सेटलमेंट हैं उन सेटलमेंट के अंदर किस तरह की सैनिटेशन की प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स की तरफ हमारा ध्यान आकर्षित किया है। मार्क्स स्वयं कैपिटल के अंदर चर्चा करते हुए एक जगह ये बोलते हैं कि ये जो फोर्स्ड लेबर है सर, और इंडियन कंटेक्स्ट में कास्ट हायरार्की में वो फोर्स्ड लेबर हमको जरूर नज़र आती है, दैट फोर्स्ड लेबर इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स फॉर द एक्यूमुलेशन ऑफ अ न्यू काइंड ऑफ कैपिटल। एक नए किस्म की पूंजी का संकेंद्रण है जो हमारे लिए शोषण का माध्यम बनता है। पूरा का कैपिटल का जो फर्स्ट वॉल्यूम है, उस फर्स्ट वॉल्यूम के अंदर जब कैपिटल के विभिन्न पहलुओं की चर्चा मार्क्स करते हैं तो वहाँ से हमारे सामने ये निकल करके आता है। दुर्खाइम, आप बिल्कुल बात कर रहे थे प्रोफेन सैक्रेड डिस्टिंक्शन की, लेकिन क्या वो सेक्युलर सैक्रेड भी वहाँ पर है? मैंने सर के उन आइडियाज़ में रिलीजियस सैक्रेडनेस के साथ साथ सेक्युलर सैक्रेडनेस भी देखी है, और जो आपको अपने सैक्रेडनेस की उस सीमा के बाहर ले जाती है और प्योरिटी पॉल्यूशन प्रिंसिपल की डायनामिक्स में एक नए प्रकार का फ्रेम हमारे सामने पैदा करती है। ठीक इसी तरह से मैक्स वेबर के ब्यूरोक्रेटिक ऑर्डर के अंदर जब हम बात करते हैं डिह्यूमनाइजेशन की प्रोसेस की, एलिनेशन की प्रोसेस की, तो मुझे लगता है कि वो जो क्लासिकल थियरिस्ट हैं, उन क्लासिकल थियरिस्ट को इंक्लूडिंग जॉर्ज सिमल, when he talks about philosophy of money, and in that philosophy of money again he is giving importance to all these dimensions। एक उस पार्ट की चर्चा करने के बाद मुझे लगता है कि कुछ नए डायमेंशंस हमको शामिल करने पड़ेंगे। मैंने जब सर ने कहा था मेरे को कि जल्दी भेजिए आर्टिकल, तो मैं उस आर्टिकल को तैयार कर रहा था। मैंने अपने इस लेख में मिचेल फोको, बाउमन, यूर्गन हैबरमास, निकोलस लोहमन, पियरे बोर्दियो, एंथनी गिडिंस, अल्रिच बेक, अमृत सेन, सैमुअल बैलिस्टीन, इन सब के आइडियाज़ में किस तरह से हम क्लीनलीनेस से लेकर सोशल हेल्थ तक के कंसेप्ट की बात करते हैं, सैनिटेशन की प्रोसेस को उसमें कैसे लाते हैं, हाइजीन को कैसे जोड़ते हैं, और उस हाइजीन से हेल्थ कॉन्शियस कैसे बनती है, उस हेल्थ कॉन्शियसनेस के साथ में सिक रोल्स कौन कौन से निकल करके आते हैं, और उन सिक रोल्स को किस तरह से हम डिसोसिएट करते हुए एक नए तरह के हेल्थ के कंसेप्ट को प्रस्तुत कर सकते हैं। हाउ पॉलिटिक्स एंड मोरालिटी इज एसोसिएटेड विद हेल्थ, व्हाट इज द सोशल सिस्टम अप्रोच वेयर हेल्थ एंड इलनेस अपीयर्स, health and illness in the context of life birth, and finally how this kind of health leads to fitness, and how fitness becomes a market phenomenon in present context and where health becomes important. All these issues, if they are taken together, then probably I can say that sociology of sanitation will act as sub-sociology. It will be a sustainable discipline, and it will invite people's interest-centric exercises for those development which we can call in terms of inclusion. So, sir, thank you very much for providing me this opportunity that I can discuss inclusive development with these new dimensions. Thank you, sir. हेलो, आपसे बैठ के बात करनी पड़ेगी, और जितना डिटेल में डिस्कस किया है आपने, और जो हमने प्रयास किया है कि पोल्यूशन को प्योरिटी में कैसे लाया जाए। अभी आप दो वर्ड इस्तेमाल करते हैं, प्योरिटी एंड पोल्यूशन, और हमने जो चीफ सेक्रेटरी थे पहले सिक्किम के गवर्नमेंट के, उन्होंने एक पेपर प्रेजेंट किया था प्योरिटी और पोल्यूशन पर। तो कहा कि हमारे घर में हर महीने पूजा होती है सत्यनारायण भगवान की, जी, दादी कराती हैं, तो पंडित जी आते हैं सामने से, और हमारे घर में कुआं पखाना था, तो पखाना को साफ़ करने के लिए एक मेहतर जो आता था वो पीछे से आता था, और पीछे से लेके वो चला जाता था।
तो उनका कहना था कि एक ही घर में दो सिस्टम है, एक प्योरिटी का, एक पोल्यूशन का, और पोल्यूशन को अलाउड नहीं था सामने से आने का। तो हमने क्या किया कि जो पोल्यूशन के लोग जो है कुछ सामने से आए, टाइम इमोरियल से उनको मना था कि वो सामने से नहीं आ सकते, वो पीछे से ही आएंगे, पीछे से इस पैखाना लेके घर से निकल जाएंगे, कोई देखे नहीं देखे उनको। तो उसके बाद श्यामलाल जी बैठे हैं जी। तो श्यामलाल जी बैठे हैं, बचपन की कथा इनकी अपनी है, ये कहेंगे आपको क्लियरिटी, हमको जितनी बात समझ आ पाई उतना बता रहे हैं कि जब बच्चे थे ये, तो जोधपुर के महाराजा के यहाँ की माँ जाती थी शौच साफ करने के लिए, सुबह सुबह ये भी साथ चले गए। तो उसी समय महाराजा साहब उधर से आ रहे थे, तो इनकी माँ ने देख लिया महाराजा साहब को आते हुए, तो वो घबरा गई, क्योंकि पुरुष मेहतर को देखना एक अपशकुन माना जाता था उस दिन के लिए। तो माँ ने क्या किया कि झट से इनको अपने आंचल में घुमा के बांध दिया। फिर महाराजा साहब चले गए, फिर इनको बाहर निकाला। बाद में ये वहाँ के विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर बन गए। अब इनको बुलाया खाने के लिए महाराजा साहब ने, जब वाइस चांसलर बने तो अब इनको तो बात याद आ रही थी बचपन की, लेकिन महाराज साहब को ना कैसे कह सकते थे ये। तो गए, खाना खाया इन्होंने, लेकिन ये कह रहे थे हमको कि बार बार मुझे बात याद आ रही थी कि इसी घर में मुझे, तो उस समय पॉल्यूशन था इनके लिए, बाद में प्योरिटी बना विद्या के कारण। वहाँ शिक्षा का महत्व हो जाता है कि वाइस चांसलर बने, इसलिए इनकी बुलाहट हुई खाने के लिए। हमने जो प्रयास किया है कि उसी पोल्यूशन को जो पीछे से आता था उसको हमने आगे से ला दिया और पोल्यूशन को ख़त्म कर दिया और प्योरिटी को कर दिया। तो चर्चा आपसे डिटेल करेंगे, और बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग पेपर आपने पढ़ा है इसको, तो मेरा थोड़ा दिमाग जगह है इस पर, तो फिर आपसे बैठ के बात करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। और पेपर बहुत अच्छा। श्यामलाल जी तो हमारे विश्वविद्यालय के कुलपति रहे हैं सर। प्रोफेसर राजीव गुप्ता जी के बारे में बताऊं कि ये नागला साहब ने मुझे इंट्रोड्यूस किया इनके बारे में, तो मैं इनको काफ़ी परसुएड किया कि आप लिखिए। तो इन्होंने कहा कि एक तो कुछ इनकी समस्याएं थी उस समय, और फिर इन्होंने कहा कि मुझे कंप्यूटर नहीं आती है। मैंने आप हाथ से लिख करके भेजो, हमको भेजो। मैंने सर ये हाथ से ही लिखा, और फिर मैंने बैठ करके इसको टाइप करवाया। बिकॉज यू सच ए गुड पेपर, मैं इसको पढ़ा, बैठ कर इसको टाइप करवाया, इसको छपवाया सर। सबसे आखिरी भी नहीं का पेपर आया था, मैं रोक के रखे थे। मुझे लगता है कंप्यूटर से ना, कंप्यूटर के इस्तेमाल से जो आपकी क्रिएटिविटी और इनोवेशन है वो कहीं ना कहीं उस पर कंट्रोल लगता है और आप इमिटेटिव हो जाते हैं। पेपर बहुत अच्छा आपका है। एनलाइटमेंट कंटिन्यू कीजिएगा, और इस एनलाइटमेंट में मेरा जो भी योगदान है। Thank you, Dr. Rajiv Gupta, for your very enlightening paper. He has dealt with new dimensions in health, hygiene, and social health. He also spoke about new reforms, and also on different thinkers on sanitation. Now I call upon Dr. N.B. Mazumdar to present his paper.
इस तरफ से करेंगे ना तो आप लोगों के भी दर्शन होंगे, उसका भी दर्शन। आप उधर देखना, हम आप लोगों को देखेंगे। नमस्कार। डायस पर अवस्थित सारे विद्वजन और साथियों, हमें बहुत खुशी है कि हमें ये मौका मिल रहा है आपके सामने कुछ अपने विचार पेश करने का। मैं करीब 38 साल से सुलभ इंटरनेशनल और डॉक्टर पाठक के साथ डायरेक्टली, इनडायरेक्टली या कहें तो प्रोफेशनली जुड़ा हुआ। तो मुझे ये उत्सुकता हुई कि ये जो इनका बहुआयामी काम है, इसमें क्या सम काइंड ऑफ इसका सस्टेनेबिलिटी के साथ साथ इसमें एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। सो आई वांटेड टू लुक इनटू दैट। सो आई नाउ गो बाय द प्रेजेंटेशन एज सच। Next, please. Well, this paper illustrates the story of an enormous sanitation movement, which was propelled by a deep desire to migrate the sufferings due to an age-old practice and achieved by appropriate technical tools. 10 मिनट में ख़त्म कर देंगे, 10 मिनट, not more than that. So here we will see this deep-rooted socio-cultural malady has gender bias even within the affected community. Now the government of India had enacted the employment of manual scavengers and construction of dry latrines. That was 1993. Then again in the year 2013, the Indian Parliament passed the Prohibition of Employment and Manual Scavengers and their Rehabilitation Act. लेकिन उससे भी कितना कुछ हुआ वो हमें सबको पता है। इसीलिए हमने ये जो सब्जेक्ट जो लिया है ना, डॉक्टर पाठक्स टेक्निकल टूल्स फॉर सोशल इक्विटी एंड ह्यूमन राइट्स. So that was the reason to look into these angles. Now this paper, next please. The torchbearer of this movement, which is Dr. Pathak, had realized that advocacy alone was not enough to bring about the desired change unless there was a scientific and dignified way to handle the job. It couldn't lead to a permanent solution, क्योंकि उसका crux वहीं पे था. There were prominent boundary conditions about the toilet also. क्या थे वो? The new system had to be environment friendly. It had to be hygienic, affordable even for the masses, and didn't require long gestation period or high skill set requirement. क्योंकि स्किल सेट रिक्वायरमेंट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू होता है फॉर मैस एप्लीकेशन. ना ओवरऑल इट हैड टू बी डिग्निफाइड एज वेल. रेलिवेंट टेक्नोलॉजीज एंड सिस्टम्स इन्वेंटेड बाय एमआर. मैं इस चीज़ को आपको 3 स्तर में बताऊंगा, क्योंकि इन्होंने इतने तरह का काम किया. ये 53 साल का गाथा है, 53 साल का कहानी है, 1-2 दिन का नहीं है. तो मैं पहले इसको इनका पहले 3 स्टेज, फिर 5 स्टेज और फिर 7 स्टेज में अलग अलग तरीके से क्या क्या इन्होंने किया है उस पर मैं बात करना चाहूँगा. सो द फर्स्ट set of 3 technologies which are directly related to this issue were, number 1, Sulabh Shauchalaya, about which a lot of discussion has been held. Now this is an appropriate household toilet which proved to be crucial in mitigating manual scavenging.
The second was Sulabh Pay and Use Public Toilet Complex, which showed the way to sustainable management and caste neutral employment in such facilities. देखिए अब तक हम लोगों ने कास्ट पे बहुत सारी बातें करी, but here in the Sulabh public toilet complex, the employment was caste neutral. You can go to any of our 10,000 public toilet complexes and you would see that different castes are employed there. And the third is the public toilet linked biogas plant in unsewered areas, paving the way for replacing the septic tanks, which had a higher pollution potential and unsafe fecal sludge management practices. So यहाँ पे ये जो fecal sludge management practice है, this also is an important issue. Actually, these are such vast subjects. One can discuss about this for hours, but here, of course, we'll just be touching upon them. Now, together, these created an environmentally compatible and socially relevant ecosystem, which was practical to the core. This was very important, that this ecosystem had to be practical. Now, the focal problem of cleaning and removing fecal matter was resolved by Sulabh Sauchalaya, which has been discussed by many of my previous speakers, in which the fecal matter was composted in situ, which rendered it harmless while storing the plant nutrients. Now, the user family could easily take out the stabilized and composted material and use the same as a potent organic manure. The product, that is the manure, could even be shared with others by the householders or even sold. The bandwagon didn't stop here. In order to provide the affected community with lasting support, Dr. Pathak incorporated intense capacity building comprising training in trades which could generate livelihood. Now, this again has been discussed by so many speakers. Now, education was provided as per their need. For their children, a revolutionary model of education was evolved. This hasn't been actually discussed here. Now, in this, the kids from the deprived community were put in the same class as the others, taking care of the socio-cultural aspects for their upbringing with the ethos of social equity. This was to instill the principle of social equity in the children. This was done like that. Now, caste-based religious barriers were broken by taking the community members to different temples where they were not allowed earlier. These feats were achieved not with conflict and violence, but with understanding and love. The magic social fabric was weaved with action sociology as the warp and the technical tools as the weft. So this was the magic actually. This great sustainable work was Dr. Pathak's way of mitigating the social climate in our country. I call it social climate mitigation. We talk about climate mitigation, but this, what he has done is social climate mitigation. Now, multidisciplinary approach. This was started 5 decades back. Friends, for the last 2 decades, we have been discussing about multidisciplinary approach, which is supposed to be a very efficient way of doing things. Now, this was acquired importance in the last 2 decades because there is a symbiotic relationship between the different disciplines. Here is a story which started 53 years ago, that is more than 5 decades ago, which embodies the spirit of multidisciplinary approach in a big way. The story revolves around its high priest, Dr. Bindeshwar Pathak, founder of Sulabh Sanitation and Social Reform Movement, who gradually created a crucible called Sulabh Sansar, in which the alchemy of strange combinations were experimented with, honed over time, leading to winds of change that nobody had imagined when he had started in the year 1968. So this was, I think, in my opinion, this was his biggest achievement.
and I have told him so many times. मुझे पता है महिलाएं जहाँ बैठती हैं चुप नहीं रहती हैं, ये मुझे पता है, ऐसा मत जाने मुझे पता नहीं है। लेकिन कृपया सीरियस बात यहाँ हो रही है तो जरा सुनिए भी। घर पर दाल पका होगा या भात पका होगा, बात चर्चा कर लीजिएगा। या हाँ बताइए। नहीं, हम लोग सुन के उनको समझा देंगे ना, उसकी चिंता नहीं। नहीं ऐसा है ना, वो हाव भाव से समझ जाते हैं लोग। हाँ, वो भाषा दो है ना, एक भाषा लिखित भाषा, एक है हाव भाव की भाषा, है नहीं। जैसे आप खड़ी हैं वहाँ पर, मैं यहाँ खड़ा हूँ, और कहीं आप में हमें झगड़ा हो जाए, मनमुटाव हो जाए, तो आप वहाँ कुछ दूसरे से बात कर रही हैं, तो मैं समझूंगा कि आप हमारे खिलाफ बात कर रही हैं। ठीक है? नहीं, बात आप दूसरी कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि हमारे खिलाफ बोल रहे हैं। ठीक है? तो ये लोग हाव भाव से समझ जाते हैं कि ये ऑथर जो है पक्ष में बोल रहा है कि खिलाफ में बोल रहा है। तो इसलिए आपका कहना सही है, लेकिन जिनको अंग्रेजी बोलने की आदत है उनको हिंदी कहेंगे तो कठिनाई होगी। हम लोग फिर समझ के बता देंगे। इसके बाद भी हम लोग कुछ लोगों को बुलाएंगे, 10-5 पेपर ऐसा बुलाएंगे जहाँ 2-3 दिन टाइम दे करके डिटेल डिस्कशन करेंगे इस पर। ठीक है ना? क्योंकि अब जो अंग्रेजी भाषा बोल रहे हैं उनको हिंदी में कह दीजिए तो मुश्किल हो जाएगा, उनका थोटे नहीं आवेगा तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है भैया, आप लोग जैसा चुप रहिए, हम लोग फिर सुन के समझा ही देंगे आप लोगों को ना। आप लोग समझ जाते हैं, आप लोग तो है नहीं। समझने वाले समझ गए हैं, ना समझे वो अनारी। है नहीं, गाना है ना, समझने वाले समझ गए, ना समझे वो अनारी है। चांद खिला और तारे सजे, ये रात बड़ी मत वाली है। ठीक है, चलिए। देखिए, हिंदी मुझे भी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन इन चीज़ों को हिंदी में लिखने का या बताने का उतनी क्षमता अभी मुझे उतना नहीं आया है। भविष्य में मैं कोशिश करूँगा, और कंप्यूटर में भी जिसमें मैं काम करता हूँ उसमें हिंदी में मुझे करना नहीं आता। सो दैट्स माय लिमिटेशन, बट एनीवे बताते जरूर सर। ये देखिए, बंगाली हैं, तो बंगाली जो हैं आज तक हिंदी नहीं सीखे हैं, ये बात समझ लीजिए आप। क्योंकि आज भी कोलकाता में जाइएगा तो लोग पैसा बोलते हैं, पैसा नहीं बोलते हैं लोग। पैसा देगा, पैसा देगा नहीं। तो बंगाली में प्रॉब्लम है कि वो अंग्रेजी साफ साफ बोल रही है, बढ़िया। कैसे बोल रहे हैं मजिंद्रा साहब? इंग्लिश फटाफट बोल रहे हैं, बट हिंदी आज तक बंगाली सीखा ही नहीं कभी वो लोग, क्योंकि कोशिश नहीं करता सीखने का। और आज भी पैसा, इतना दिल्ली में रहते हैं इसलिए, नहीं तो कलकत्ता में कितने बंगाली मिलेंगे, सब पैसा है नहीं, पैसा कोई नहीं बोलता है। ठीक है, थैंक यू। मैंने मजाक के लिए कहा हमने। Well, the spirit of his endeavor was his humane approach, filled with piety and concern for the pain and trials and tribulations faced by the lowest rung of our society, who were burdened with manually cleaning bucket toilets and carrying the material to the disposal ground as a head load. So this he felt this pain. He stayed with them for months together, sharing and feeling their agony, and started breaking the fetters, not with force, but by convincing the concerned stakeholders with love. He realized that mere advocacy was not adequate to achieve a sustainable change.
strong and appropriate tools were required to bring about lasting change in the system and the society. वहीं से मेरा एक्चुअली इस प्रस्तुति का मुख्य विषय है. He realized that the root cause was a very mundane issue, a dignified place to defecate, that is a toilet, which was simple and affordable for the masses, and the freedom from the need to hire someone to clean it. So this was a simple, mundane issue, but this was the whole crux of this pain and tribulations. The toilet had to be, or should be, hygienic, environmentally compatible, and in keeping with the ground situation, such as availability or scarcity of water, because that also is an important issue. आज आप देख रहे हैं पानी की कितनी कमी हो रही है. And of course it has to have a long life. Next please. ये मेरा बहुत प्रिय वो है, और फाउंडर साहब से भी मैंने कई बार इस चीज़ को कहा है कि मैं इसको एक क्रूसिबल के तरफ देखता हूँ, एक अल्केमी का क्रूसिबल के तरफ देखता हूँ, जहाँ इनके 3 आयाम है. टेक्निकल टूल्स है, एक्शन सोशियोलॉजी है, और सोशल इंजीनियरिंग है. और इसका जो सम टोटल जो इम्पैक्ट होता है, दैट लीड्स टू सोशल इक्विटी एंड ह्यूमन राइट्स. तो ये चीज़ है. हाँ, तो नेक्स्ट प्लीज. नाउ अभी जैसे हमने कहा था ना कि मैं 3 स्तर में फाउंडर साहब का जो इन्वेंशंस है उसको बताऊंगा. तो पहला 3 तो मैंने कह दिया, विच वाज बेसिकली टॉयलेट रिलेटेड. अब मैं 5 वाले के लेवल में आ रहा हूँ. तो टेक्निकल इनोवेशन में इनका पहला हो गया सुलभ शौचालय, विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. सेकेंड इज सुलभ पब्लिक टॉयलेट, ऑलरेडी डिस्कस्ड. पब्लिक टॉयलेट कॉम्प्लेक्स रिलेटेड टू बायोगैस प्लांट, डिस्कस्ड. नेक्स्ट, additional developments, use of water hyacinth for biogas production as well, क्योंकि ये भी बहुत जगह पे एक प्रॉब्लम के तरह, एक समस्या के तरह रहता है. अगर उसको ह्यूमन वेस्ट के साथ अगर बायोगैस प्लांट में डालते हैं, ज़्यादा गैस बनेगा, उसकी उपयोगिता बढ़ेगी. इसको इन्होंने दिखाया. और जैसा कि अभी सरकार साहब लंच के पहले इन्होंने बताया था ना, प्रोविजन ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर in areas with geo-contaminated aquifers by using surface water in a simple, smart manner. मैं इसको एक स्मार्ट मैनर इसलिए कहता हूँ कि देखिए टेक्नोलॉजीज़ तो और भी हैं, जिससे आप आर्सेनिक हटा सकते हैं, फ्लोराइड हटा सकते हैं, आयरन हटा सकते हैं. सभी के टेक्नोलॉजीज़ है, कुछ केमिकल हैं, कुछ इलेक्ट्रोकेमिकल है. लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि जिस एरिया में सरफेस वाटर एडिक्वेटली अवेलेबल है, पेरेनियली अवेलेबल है, पेरेनियली मतलब 12 महीना जहाँ पानी अवेलेबल है, एडिक्वेट क्वांटिटी में काफ़ी पानी अवेलेबल है, वहाँ आप सरफेस वाटर को शुद्धिकरण करके पेयजल के रूप में उसको व्यवहार कर सकते हैं. इससे ये होगा कि इतना सारा जो सरफेस वाटर है, चाहे वो पॉन्ड्स में हो, तालाब में हो, लेक में हो, झील में हो या नदी में हो, जिसको उतना उपयोग नहीं किया जाता है, हर जगह सरकार के तरफ से बड़ा बड़ा बोरिंग वेल वो इंस्टॉल किया जाता है. तो जहाँ पे ज़्यादा पानी बरसता है वहाँ तो इसको कर ही सकते हैं. तो ये एक बहुत बड़ा रास्ता इन्होंने दिखाया. मधुसूदन घाटी या बंगाल में जो किया गया है आधे दर्जन जगह पे, ये एक एग्जाम्पल है जिसको कि सारे देश में जहाँ भी ज़्यादा बारिश होती है वहाँ पे इसको लागू किया जा सकता है. नेक्स्ट प्लीज़. इस पे बहुत बात हुई है. यही जो है ये सारे चीज़ों का मूल मंत्र यही है. अच्छा, देखने में तो ये बहुत छोटा सा लगता है, सिंपल लगता है, सिंपल ये है, लेकिन इसके अंदर में भी बहुत सारी इंजीनियरिंग है. उसको अगर मैं डिटेल में बताना चाहूँ तो कम से कम 1-2 घंटा लग जाएगा. तो वो टाइम अभी नहीं है. आप ये जानें कि ये सिंपल सा देखने वाला जो सिस्टम है सुलभ शौचालय, ये ऐसे ही नहीं है.
इसके अंदर भी बहुत सारी इंजीनियरिंग है और ये बिल्कुल एक पुख्ता सिस्टम है, कोई ऐसा वैसा चीज़ नहीं है। नेक्स्ट प्लीज़। ये उसका पहला वाला था लेआउट और ये उसका सेक्शन है। नेक्स्ट प्लीज़। अब हम आपको दिखा रहे हैं जो बायोगैस वाला आपने देखा भी होगा जब आप हमारे यहाँ गए होंगे। एक्चुअली जो बायोगैस प्लांट है, मैं आपको ये बताना चाहूँगा, वो ये जो ड्रम दिख रहा है बायोगैस होल्डर लिखा हुआ, वो मेन बायोगैस प्लांट नहीं है। बायोगैस प्लांट जहाँ फूल लगे हुए हैं उसके नीचे है। इसके बारे में भी बहुत डिटेल में बात करी जा सकती है, लेकिन वो बाद में कभी होगा। नेक्स्ट प्लीज़। इसका बायोगैस प्लांट का ही जो हमारा सिस्टम वहाँ पे है, उसी का एक सेक्शन ड्राइंग ये है। तो इसमें ये पूरा दिखाया गया है कि बायोगैस प्लांट वो पब्लिक टॉयलेट से लिंक्ड है, फिर उसका जो एफ्लुएंट निकलता है उसका शुद्धिकरण कैसे करते हैं, जिसको हमने नाम दिया है हम लोगों ने सेट, यानी कि सुलभ एफ्लुएंट ट्रीटमेंट, सेट टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट प्लीज़। हाँ, ये एक इम्पॉर्टेंट वो है कि हम लोगों ने अब तक जो देखा कि हमारे फाउंडर साहब ने जो अलग अलग टेक्निकल टूल्स इन्होंने दिए हैं, उसका टेक्निकल इम्प्लीकेशन क्या है, फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन क्या है, सोशल इम्प्लीकेशन क्या है। तो मैं समझता हूँ इसको अगर हम डिटेल में क्या अभी बताएं, लेकिन टाइम और लग जाएगा, या फिर पेपर में तो है ही, लोग देख लेंगे। तो इसमें हमने कंपैरेटिव एक बताया है कि किसी भी एक चीज़ का, मैं एक का खाली बताता हूँ। देखिए, सुलभ शौचालय है, इसका टेक्निकल इम्प्लीकेशन क्या है। सो एनवायरमेंटली कंपैटिबल एंड इट रिक्वायर्स मच लेस वाटर, विच इज अगेन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू। पानी जो है आजकल एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़। आप सेप्टिक टैंक रखेंगे, आपको कम से कम 5-6 लीटर लगेगा। आप सीवर लाइन अगर रखते हैं तो अगर 100 LPCD यानी कि 100 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन, उससे कम अगर आपके घर से सीवर लाइन में जाता है तो सीवर लाइन में चोकिंग होने की, उसका सेल्फ क्लीनिंग जो वेलोसिटी होता है वो होगा नहीं। ये जो सिस्टम है इसमें कम पानी लगता है, ये एक बहुत बड़ा टेक्निकल इसका लाभ है। फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन, लेस कॉस्ट देन सेप्टिक टैंक, लोकल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। और सोशल इम्पैक्ट क्या है, यूज़र फैमिली कैन टेक आउट द stabilized manure after the recommended period, hence no need for hiring scavengers. The main support for liberation from manual scavenging, social equity and human rights, this is the crux of the thing. उसी तरीके से बाकी चीज़ों का भी दिया गया। नेक्स्ट एंड नेक्स्ट प्लीज़। इसके बाद आगे हम चलते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पे अगर हम कहें कि सिर्फ सुलभ शौचालय का अगर हम देखें अलग से कि इसका एट्रीब्यूट क्या है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है एज ए टूल फॉर सोशल चेंज। नाउ फॉर ए कंट्री लाइक इंडिया, ऑफ कोर्स नहीं, इसको हम आगे ही चलते हैं बिकॉज इट हैज़ ऑलरेडी बीन डिस्कस्ड। नेक्स्ट प्लीज़। हाँ, इसमें भी मेरे ख्याल से इसको भी छोड़ सकते हैं, आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्लीज़। तो अगर हम इसका इन बिंदुओं पे देखें, क्रक्स वो ये है, लिबरेशन ऑफ स्कैवेंजर्स एंड देयर कैपेसिटी बिल्डिंग थ्रू ट्रेनिंग पॉसिबल बाय द कंटिन्यूअस एंडेवर ऑफ सुलभ इंटरनेशनल इंस्पायर्ड बाय डॉक्टर पाठक। Ladies of erstwhile scavengers families from Alwar and Tong, Pakistan have completely transformed lives and livelihood, जो हम कल से हमने देखा भी है। Similarly, the old widows and abandoned by their families, precariously living in ashrams in Vrindavan and Varanasi, have got new lives, good health, and renewed spirits. In contrast to Sulabh Shauchalaya, septic tanks require 5 times more water. इसमें आपको 1-1.5 लीटर लगता है, वहाँ 5 से 7.5 लीटर लगता है। ये एक एल्केमी चल रहा है, आपका जो एक्सपेरिमेंट है उसमें क्या क्या है। सुलभ शौचालय है, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड एजुकेशन है, सोशल इंजीनियरिंग है विथ सोशली पॉजिटिव कोर, स्कूल सैनिटेशन क्लब है, डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन थ्रू म्यूजियम्स। हमारे पास 3 म्यूज़ियम हैं, वाटर म्यूज़ियम, सैनिटेशन म्यूज़ियम और
MHM, menstrual hygiene management, or dissemination of knowledge through incorporation in educational curricula in colleges and universities for which we are here, mitigating the sufferings of abandoned widows, and providing safe drinking water in areas with geocontaminated aquifers. तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो सुलभ संसार है, यहाँ जो अनवरत जो ये अल्केमी चल रहा है, उसके ये 7 कंपोनेंट मेन है. नेक्स्ट प्लीज. In conclusion, this story has stood the test of time, 53 years, by standing tall and becoming taller over the last more than half a century, and has set up bright examples of social reforms through action sociology and social engineering. At the same time, enviable track records have been set by construction of about 1.6 million household Sulabh Shauchalaya and 10,000 Sulabh public complexes. Thus, hardware and software have been churned in the crucible of change in the most efficient manner. तो ये हवा में नहीं है, 53 साल से जो ये बना है, ये वास्तव है. Thank you. I can say only one thing, we have converted him into action sociologist. I am grateful for that. If you see his triangle pyramid, he's put action sociology. Finally, he is acknowledged action sociology. मैं तो यही का हूँ. हाँ? चलो
So thank you, Dr. N.B. Mazumdar. You have clearly mentioned the efforts of Dr. Patak in his various tools, such as two-pit toilets and other things. The purpose is only to bring about social equity and maintenance of human rights. Next, I call upon Dr. Y. Ravinath Rao to present his paper. Dr. Ravinath Rao is sitting here, and you are the former principal of SMS College, Brahmavar. And after his retirement, he worked as social anthropologist in government of Karnataka. So he is a erudite scholar. Now I call upon Dr. Rao to present his paper. Respected founder of Sulabh organization, noted action sociologist, father of Sociology of Sanitation, Dr. Bindeshwar Patak ji, sir, organizing secretary of Sulabh National Conference, Professor Neel Ratan ji, sir, chairperson of session 2, Dr. Richard Pius, my good friend, co-chairperson Professor Anil Vaghela, rapporteurs Professor Joseph Matthew, Bharat Patel, Kriti Mishra, Kriti Mishra, Vice Chancellors from different corners of India, my colleagues from different states of India, dedicated members of Sulabh organization, students, delegates, ladies and gentlemen. I'm extremely happy to be here to present my paper titled Processes of Sanitation Culture, a Social Anthropological Overview. This is the paper which I have prepared from anthropological perspectives. Various anthropological theories, constructs I have fitted in the phenomenon of sanitation. I have endeavored to assess and examine the anthropological concepts, particularly the concepts of culture process in relation to sanitation. I am not going to read out the entire paper. हिंदी में शोध पत्र पढ़ना मुझको मुश्किल होता है, इसके लिए मना करना चाहिए. Please pardon me for reading in English. It's important to note that the issue of sanitation can be addressed at best by examining the notion of behavior and things go together. The process of culture are adopted in society consciously and unconsciously. A noted anthropologist, Melville, process of adopting scavengers, empowerment and foreign tours of liberated scavengers, etc., could be taken as
acculturation process going on in sanitation domain. These acculturation changes are purposely directed or controlled. Culture diffusion is another prominent process of social change. The role of diffusion has gained a special significance in the present context of globalization and post-globalization. S.L. Doshi and P.C. Jain are of the view that, I quote, when the culture of a society evolves some new inventions, a custom or a trade, and it is passed on to another culture, I unquote. Diffusion is belonging to other cultures. Bindeshwar Pathak, in his directed change through Sulabh Shauchalay, endeavored to assess the diffusion of directed contact change in the area of urban sanitation, as observed by him with special reference to Lohanipur Mohalla of Patna in Bihar. The diffusion is an important step in the social change preceded by invention and followed by consequences. Pathak attempted to assess the relationship between the types of adopters of Sulabh Shauchalay in relation to their education, occupation, age, sex, taxpayers, etc. This study is an important contribution to the field of diffusion of innovation. Integration is another culture process, obvious in the structure of culture. There are various elements of a culture and they are interrelated. They lead to cultural integration. We may say that by liberating and rehabilitating scavengers, by bringing scavengers to the mainstream of society, by creating employment opportunities for the integrated development of villages, and through social reform movements, implementing affordable sanitation services, Sulabh has contributed to the social and cultural integration of India. Anthropologically speaking, when the social processes reach a high degree of integration, it takes the form of assimilation. The assimilation of scavengers in the mainstream through Sulabh social reform movement could be taken as an illustration in this context. However, as observed by anthropologists, the assimilation process is a complex phenomenon. Therefore, sociologically, the perfect or total assimilation has to be regarded as an ideal type. Finally, invention also serves as a process of culture change. Anthropologists and sociologists examine the significance of invention and discovery in their analysis of cultural and social change. Discovery refers to the finding something new and it is accidental, whereas the invention is a purposeful discovery. Invention plays an important role in the spread of cultural traits. According to Bindeshwar Pathak, I quote, invention is the process of creation or development of new ideas and practices. The changes brought about by the adoption or rejection of innovation are called consequences, I unquote. The two-pit toilet model, pay and use public toilets, biogas plants, toilet museum, solid waste systems, wastewater treatment systems, Sulabh Jal, that is recycled water, invention of sanitation club, sanitary napkin felicitation center are the various sanitation-linked inventions invented by Pathak. What noted anthropologist Melville J. Huskowitz said about inventor as a theorist, a philosopher, a visionary, and even a revolutionist also holds good to Dr. Bindeshwar Pathak. We may also observe multiple effects, that is dispersion due to inventions observed by William Ogburn in 2022, his study, of large number of culture traits resulting from Pathak's sanitation-related inventions in the process of social change. I would like to conclude my discussion, concluding observations. The present study is useful in culture change studies with reference to sanitation. The findings of the study suggest that there is a need to assess the degree of sanitation culture processes. There is a need to strengthen the sanitation culture processes by implementing Sulabh Shauchalay programs, besides framing new schemes and interventions by the sociologists of sanitation. The paper also suggests that there is ample scope to carry out studies on sanitation by applying the findings of cultural studies by A.L. Kroeber,
Melville J. Huskowitz, Ralph Linton, William F. Ogburn et al. There is also a need to strengthen and intensify further for the promotion of sanitation and Sulabh sanitation movement. The study suggests that Pathak's experimentation carried out on diffusion of Sulabh two-pit invention at Patna needs to be extended further in various other cities and towns of India by upcoming Sociology of Sanitation. This paper is a contribution to contemporary policy debates about the role of developing modern nation states in sanitation sector. It is also a contribution to anthropology of sanitation, sociology of sanitation, and action sociology. This study also contributes in determining the direction of the future trend in sanitation culture processes, sanitation services, sanitation promotion, research and investigation on sanitation. Thank you one and all for patient listening. Thank you very much, Dr. Y. Ravinath Rao, for your paper. And Dr. Y. Ravinath Rao studied the sanitation culture through social anthropological overview. And he has analyzed in such a way that he has mentioned how it brings about social change. Now I know that you are all tired and we will break for tea and we will assemble here just after 15 minutes. Now it is 5:20, so 5:35 you will come back. 5:40, sir says. And as soon as we assemble here, Dr. Basil Hans will present his paper. Get ready. Read out other names also. Then after him, Dr. Krati Mishra. Then Dr. Payal Ba, Mrs. Neha Chavan, Dr. Pramod Kumar Shukla, and Dr. Sanjay Mishra. Okay. Thank you. This has to be extended by 2 days.
So good evening, everybody. All of you had good tea, I suppose. Yeah, now I call upon Dr. V. Basil Hans to present his paper. Dr. Basil Hans hails from Mangalore and is an erudite writer. He has written nearly 40 books and 2,000 papers. Yeah. And you have seen yesterday, 2 of his books were published. Yeah, one in the morning, one in the evening. One is Economics of Sanitation and Sustainable Sanitation. So he is a famous economist from coastal Karnataka. Welcome. Dignitaries on the days, of the days, professors, ladies and gentlemen. At the outset, I must make one or two admissions. I am neither a sociologist or a social worker. I am an economist. For most of you, I may seem out of place. But Dr. Richard Pice brought me into sociology through his friendship and neighboring discipline. Dr. Neil Ratan sir and Dr. Bindeshwar Patak ji brought me into action sociology and sociology of sanitation. So when we speak about many epithet of Bindeshwar Patak ji, he is a messiah, he is a toilet guru, he is a miracle man also. He can convert any people from any discipline. He thinks out of the box, and I am a living example to that. Fortunately or unfortunately, in the volume of papers distributed, 2 of my papers have come. I don't know how it happened. That's another miracle. But I'm not definitely not going to read 2 papers or deal with 2 papers. Well, the other one which I'm not touching is research areas for sanitation. I'm not touching on that. Mine is urban sanitation in particular. I have reframed the title from that book. Poor sanitation hurts urban planning. We have urban planning, but that is not going on well because of poor sanitation. Most of the time we think that it's all rural areas. We blame on rural areas. There is poor hygiene, health, and poor sanitation, and urban areas are doing well. But we most often don't look under our very nose. Take the city of Delhi. I have had experience of using public toilets in the monumental places of Delhi. I had to come running out of it than using it. If this can happen in Delhi, then how could be the other mega cities, smart cities of India? So I think we have to be really careful about it. The problem, as somebody said, is very close, not far away. So I thought even though we are all belonging to the cities and urban areas, we should not simply blame the rural areas. We have to look at our own problems. Urban areas generate 60% of India's national income, but 40% of urban disposal or waste is not properly disposed. Are we really educated or cultured? So my first book on sanitation was Culture of Sanitation, before moving on to Economics of Sanitation and Sustainable Sanitation, where I have traced sanitation from Indus Valley to Sulabh International. Looking into various countries and states of India, how the practice is and the need. In today's paper, I speak about the 11th Sustainable Development Goal for resilience and efficiency
These two words, resilience and efficiency, are nearly used 30 times in the document. Particularly for urban areas, sustainable development is a must. And that is because our urban areas are suffering from the major issues of health and hygiene depicted in poor sanitation. Because of sanitation or poor sanitation, GDP falls by 7%. This is the economics we have to carefully look at and not say that economics has nothing to do with sanitation. Sanitation has a huge economic cost. Sanitation economics is growing in developing nations slowly, looking at the investment in toilet-related resources. This was admitted by none other than Professor Keshav, an economist from Bangalore University. In fact, he wrote the foreword to one of my books. So the true cost of sanitation is the economic cost of lack of sanitation in relation to mortality, productivity, healthcare, and access. In 2015, lack of sanitation cost the global economy US $222.9 billion. So billions of rupees are lost because of poor sanitation. Why I am stressing on urban areas is this is our house, urban house, ecos, but we have not managed the house properly. Economics is management of the house, ecos and nomas, but we have not managed the house in the required manner. We have to look at the circular economic feasibility. Is there a value up in cycling toilet resources? Can we scale up the business models of sanitation? Does the system attract large industrial buyers? So on and so forth. And even microeconomics is part of sanitation because every household has to plan its sanitation, health and hygiene by asking itself, what are the opportunity costs from raw water and wastewater? What is the transport cost related to water to the city? How can rainwater be used for drinking? How can urban household treat the wastewater? How to collect the sewerage, wastewater treatment and discharge of wastewater and costs and damages, which we call as negative externalities in economics. We also have to conduct a cost-benefit analysis for water and sanitation economics. A study has found out that poor health and hygiene in Indonesia and Cambodia are the major reasons for economic losses. It is not recession. It is pure sanitation that is the culprit in these countries. So we must plan about a sanitation economy, sanitation business model, and sanitation economic entrepreneurship, and new financial models of sanitation. So we are really appreciating the SLUB initiatives in this direction because their models are low-cost models, high-tech and infrastructural intense models. Sanitation, health and economy, all populations above 158 and 172 people per hectare has to be concentrated in good sanitation facilities, simplified sewerage and treatment cost. But 1.7 billion people lack private toilets or latrines in India. At least 10% of the world cost is because of poor wastewater management and irrigated cost. But at the same time, good sanitation has got some economic benefits. There will be low cost of health care because of less tropical diseases and their better treatment, minimizing malnutrition, and also solving water-related problems. So the challenges are really severe. The situation is going from worse to worse. Urban areas poses growing challenge in their living increasingly in the cities because of poor sanitation. So we have to divide these topics for further studies into health and economy, water economy, women and economy and sanitation, children and economy and sanitation, and Indian sanitation history and culture. It's very good to note that some programs are already coming up in the name of Swachh Bharat Mission. Better strategies are being
implemented by the government for strengthening the district level institutions, for empowering local bodies, for managing the sanitation. So planning has to be done not in just in terms of general sanitation environment, but also in the times of the pandemic. So slum sanitation has to gain momentum in Indian situation. Similarly, as I told you in the introduction, when we speak about smart cities and smart cities mission, we must see that there is enough water, there is guaranteed power, sanitation and waste disposal, urban transportation, community digitalization, e-governance and citizen participation. So planning, implementation and monitoring make the mission smart and evolving. We must also think about shelter and sanitation for payment dwellers. This is one area that we have not touched much. So payment dwellers problems. We have just in general touched upon slums and sanitation, but not payment dwellers. Sanitation and slum development program is already implemented. Jawaharlal Nehru Urban Renewal Mission is in place. There are urban bodies looking into these problems and amenities required by the people of these areas. So you have to plan ahead. So my suggestions are as follows. Exploration and preparation, planning and feasibility, formal planning and zonal planning, design and execution, operation, urban farming, healthy diet, controlling food waste, greener or greening for healthier environments, connecting cities to rural areas or urban, what we call as, better local governance and financial management. These are how to stop slums, urbanization in a healthy manner, not eviction, not the bulldozer policy of clearing the slums, but long-term and sustainable decent housing facilities for the urban areas. So Swachh Bharat program and SWM programs, municipal waste management and solid waste management programs will come in very handy. And in the post-COVID-19 situation, quarantined household waste disposal also gets due attention. So urban sanitation, India has to take care because already 27.78% of its population is urbanized, living in urban areas. 21.8% of Delhi slum holders use public taps and public toilets. So we have to pay real attention to the urban areas of India. Defecation, open defecation, undrinkable water, dense living, uneducated people, poor health and diseases on the rise, education decline, deflation. So India must come forward to have a national policy on fecal sludge and septage management. It has already started that in 2017. Surveys have been conducted and strategies have been decided. In conclusion, I would like to say that city houses half the world's 7.5 billion people, and therefore we have to look within the cities before we think in terms of the worldwide or the neighborhood. So the UN Environment Rockefeller Foundation has made preparatory meetings for this shaping of the urban agenda. City population, infrastructure, runoff water, urban heat, island effect are all getting due attention. Development of green space, making city more resilient. So in this connection, we all have to take a pledge to make our cities livable cities. And conferences like this are useful because we meet with administrators, experts, citizens all together, talk to everyone, raise awareness. Instead of waiting, look and see what you can do now in the realms of our possibilities. Find someone who can keep us in the momentum. That is, Sulabh is keeping people on the track. Everyone is becoming an action sociologist, not just a theoretical expert in the subject. So it is engaging people. I congratulate Sulabh for this, engaging people in the socialization in the problem of sanitation. And second suggestion I would like to make to Sulabh is bring the people into it and start with small activities. You do not think large and big. Start small. Small is beautiful. Make some intervention locally and then in a larger way. So no one likes secrecy. Sustainable urban planning requires everyone to get involved and everyone to get dirty. Thank you.
I just conclude. Okay. ये पेपर जो पढ़ा गया ये है कल्चर ऑफ सैनिटेशन। तो शौचालय और शौचालय में काम करने वाले लोग, शौचालय के लिए काम करने वाले लोग, उनको पोल्यूटेड कहा जाता था संस्कृति में। हमारे कल्चर में टॉयलेट्स को और उसको ऊपर साफ करने वाले को अनटचेबल कहा जाता था। एक कल्चर था हमारा। तो हम लोगों ने वो जो कल्चर था हमारा पोल्यूशन का कि जो काम करेंगे इसमें वो पोल्यूटेड कहे जाएंगे, टॉयलेट का नाम कोई लेगा नहीं, पैखाने का नाम कोई खाने पर ले ले तो राम राम हो जाएगा। अरे राम राम क्या नाम ले रहे हो, ठीक है। अब 50 वर्षों के बाद हम लोग की साधना, त्याग, तपस्या और फिर जो एक्शन सोशियोलॉजी ऑफ सैनिटेशन, कल्चर ऑफ सैनिटेशन, इन सारे के प्रयास से अब यह हालत हो गई है कि अब हर आदमी, भारत के प्रधानमंत्री जी, सारे मंत्री जी, सारे विधायक जी, सारे सांसद जी, हाँ, और सब जगह यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में अब शौचालय सबसे टॉप प्रायोरिटी पर है। जैसे गांधी का नाम पहले और अभी भी नमक के रूप में लिया जाता है कि जब तक गांधी का नाम नहीं लेंगे तब तक आपका भाषण अच्छा नहीं होगा, तब तक खाने में स्वाद नहीं आएगा। उस प्रकार से अब शौचालय का हो गया है, जिसके नाम नहीं लेते थे अब खाने पर ही चर्चा करते हैं, वही समय मिलता है उनको। भाषणों में शौचालय पहले आ जाता है। तो ये कल्चर जो है कैसे बदला हम लोगों ने, कितने प्रयास किए हम लोगों ने। ऑनेस्ट मैंने अवार्ड तो दिया था ऑनेस्टी के लिए, उससे इसका कोई संबंध नहीं, लेकिन इस बात के इम्प्रोमिनेंस के लिए हमने कितने काम किए इसमें। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री तक को भी, हालांकि अवार्ड प्रधानमंत्री को नहीं दिया था हमने, वो तो विरोधी नेता थे, अटल बिहारी वाजपेयी, उनको ऑनेस्ट मैंने अवार्ड दिया जब विरोधी दल के नेता थे। तो जब अवार्ड देने की बात आ गई तो वो प्रधानमंत्री बन गए थे। तो सारी एजेंसियों ने, जो प्रधानमंत्री के होते हैं, तो सारे एजेंसियों ने मना किया कि भाई एनजीओ का अवार्ड प्रधानमंत्री कैसे लेगा। सबने विरोध दर्ज किया। अटल बिहारी वाजपेयी जी जब पुरस्कार लेने आए तो जो बोलते थे, पाठक साहब बड़ा मुश्किल हुआ, सारे लोगों ने विरोध किया, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, मैं तो विरोधी दल का नेता था, तब हमने निर्णय लिया था, स्वीकार किया था। अब संजोग से हम प्रधानमंत्री बन गए तो पुरस्कार मैं कैसे छोड़ सकता हूँ। ठीक है, जो राशि देंगे वो मैं कहूँगा किसी दूसरी संस्था को दे दे। वो तो राशि नहीं लिए, लेकिन पुरस्कार लिया उन्होंने। WHO की एक किताब है, स्कीटा डिस्पोजल इन रूरल एरियाज
एंड ए स्मॉल कम्युनिटीज। उसमें लिखा हुआ है कि जितने भी शौचालय के डिज़ाइन है और डिस्पोजल के, ह्यूमन वेस्ट डिस्पोजल के, उसमें जो पिट प्रीवी है सबसे यूनिवर्सल वही है, मतलब सबसे एप्लीकेबल वही है। उसी को पढ़ने के बाद मेरे दिमाग बात आ गई कि इस मतलब ये टेक्नोलॉजी ठीक है, ये अब कैसे बनाया जाए। उसमें 2 पिट नहीं था, 1 पिट की संकल्पना थी, बोर्ड होल था वो, तो उसको हमने अप्रूव किया, नया किया, हमारे गुरु थे उनसे भी बात किया हमने। तो अब उसमें WHO को पुरस्कार देने की बात आई। हमने कहा कि भाई जिसका कर्ज खाया है उसको दक्षिणा दे देते हैं। तो WHO का पुरस्कार जब लेने की बात आई तो जिनीवा गया हेड ऑफिस में कि सुलभ पुरस्कार WHO दे रहा है। तो उस वक्त डिप्टी प्राइम मिनिस्टर माननीय श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी वो पुरस्कार देने आए। तो कहा कि सुलभ का पुरस्कार मिल रहा है, बड़ी अच्छी बात है। तो लोगों ने कहा कि नहीं सर, सुलभ को नहीं मिल रहा है, सुलभ WHO को दे रहा है। तो बोले अरे लाल कृष्ण आडवाणी जी ने कहा कि अरे ये तो कहीं सोचा भी नहीं था हमने सोचा था कि सुलभ का पुरस्कार मिल रहा है। अरे सुलभ WHO अवार्ड दे रहा है और WHO ले भी रहा है। अब WHO लोग सब खड़े थे, बड़े बड़े लोग अवार्ड लेने के लिए। अभी एक बात सज्जन मिले हमको जो वाश में काम करते हैं, तो वाटर सप्लाई सैनिटेशन कोलैबोरेटिव काउंसिल के हम लोग मेंबर थे। अब उसने कहा कि भाई WHO को जब दे दिया तो हमको क्यों नहीं, हम तो आधे काम कर रहे हैं इसमें से। हमने कहा कि हाँ अच्छा काम तो आप कर रहे हैं, बात सही है, चलिए आपको भी देते हैं। तो वाटर सप्लाई सैनिटेशन कोलैबोरेटिव काउंसिल को भी पुरस्कार सुलभ ने दिया और उसने भी स्वीकार कर लिया। मनमोहन सिंह जी को भी पुरस्कार दिया। तो दोनों प्रधानमंत्री को पुरस्कार दिया। तो एक NGO जिसके नाम पर लोग नाक बहुत सिकुड़ते हैं, कहीं आप जाइए किसी के पास, अच्छा NGO से आए हैं, अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब वो मुस्कुरा देगा आपको, मतलब कोई गड़बड़ आदमी है। NGO चलाने का मतलब है कुछ गड़बड़ काम आप करते हैं। वहाँ पर जो है इस प्रकार से संस्कृति, जो कल्चर ऑफ सैनिटेशन की बात आई है, तो पूरे कल्चर को बदल दिया हमने। उसमें 50 वर्ष लग गए हमको, ऐसे ऐसे काम किया हमने। तो उसमें सरकार की स्वीकृति आई और सबने स्वीकार किया अंतर्राष्ट्रीय संस्था हो। और कल कहा था हमने कि 140 संस्थाएं दुनिया में हैं जिनको कि जनरल कैटेगरी में रखा गया है इकोसॉक से, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल से। इंडिया से 2 संस्था है, एक है ब्रह्मा कुमारी और एक है स्लो इंटरनेशनल। आप सोच सकते हैं कि दुनिया में 140 संस्थाएं, 35 लाख NGO इंडिया में है, जिसमें 2 लाख सही इनकम टैक्स भरते हैं, रिटर्न भरते हैं, 2 लाख लोग हैं, बाकी लोग ऐसे वैसे हैं। तो उसमें से, और दुनिया में तो कितने लाख करोड़ होंगे, उसमें से 140, उसमें से इंडिया से 2। न्यूयॉर्क से जो मेयर है जो बिलासी पहले थे, तो न्यूयॉर्क के कॉरपोरेशन ने आप लोगों को पुरस्कार दिया, 1 डे आपके नाम से किया, 3 आदमी के नाम से अब तक किया है उसने दुनिया में। तो एक नाम आपका भी है कि 14 अप्रैल जो है वो बिंदेश्वर पाठक के नाम से डे मनाया जाता है। तो उसने एक दिन अपना आपके नाम से कर दिया। संयोग है कि उस दिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का भी जन्म है 14 अप्रैल को। तो ये इम्पोर्टेंट इसमें ये हम कहना चाहते हैं आपको
कि कल्चर ऑफ सैनिटेशन की जो बात चल रही है, तो सैनिटेशन दो वर्ड है, कल्चर और सैनिटेशन। तो सैनिटेशन कल्चर में सबसे लोएस्ट रंग पर था, वो दोनों तरफ से, मनुष्यमल की तरफ से, ह्यूमनिस्टिया की तरफ से। एक अखबार के एडिटर ने उससे कहा कि पाठक जी हम लोग क्या करें, चाहते हैं छापना समाचार, लेकिन हमारा अखबार जो है सुबह सुबह नाश्ते पर लोगों को मिलता है, लोग नाश्ते पर बैठते हैं तो अखबार पढ़ते हैं। अब कैसे हम छापें शौचालय के बारे में फर्स्ट पेज पर, क्योंकि लोग अखबार लेंगे नहीं हमारा, तो बोले शौचालय के न्यूज छाप रहा है ये। तो कल्चरली सैनिटेशन एकदम जो उन्होंने कल पूर्व राष्ट्रपति जी ने कहा वो सही कहा। 3 बार 2014 के पहले सिर्फ 3 बार सिर्फ सैनिटेशन वर्ड के जिक्र हुआ है। पहले होता था हेल्थ में, बाद में होता था वाटर सप्लाई में, और तीसरी बार सैनिटेशन का जिक्र, सैनिटेशन वर्ड 3 बार पार्लियामेंट में आया 2014 के पहले। और जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने तब इन्होंने टॉप प्रायोरिटी उसको ले गए। तो कहने का मतलब है कि जो इन्होंने पत्र प्रेजेंट किया है बहुत अच्छा पेपर इनका है, बहुत ही बढ़िया है। कल इनकी 2 किताब रिलीज हुई। तो ये है कि जो शौचालय को स्वच्छता के साथ साथ संस्कृति को बदलना है, जो उन्होंने कहा है वो बड़ी अच्छी बात है कि जब संस्कृति में जब स्वीकृति नहीं मिलेगी तो कुछ नहीं होगा। तो कल्चर में इसको एसिमुलेट होना है, और ये हो गया। 50 वर्ष में कोई कहे कि भाई हमने पहाड़ को बदल के उठा के रख दिया है, तो छुआछूत देश में ये लोग बैठे हैं, ब्राह्मण कहलाए, ये सुना था कभी आपने कि सामने सब बैठे हैं सब? और 50 वर्ष में शौचालय जो है गले का हार बन जाए, महिलाओं के गले का हार हो गया। अब हर आदमी शौचालय, हमने शौचालय बनवाए, हमने बनवाए। अब तो कंपटीशन हो रहा है कि हमने किया तो हमने किया, हमने किया तो हमने किया। और जब हम काम शुरू किए थे तो श्रीमती जी बैठी हुई हैं, तो उनके पिताजी ने कहा कि मेरे लड़की का जीवन खराब कर दिया। आप ये हम सोचे थे कोई अच्छा काम करेंगे, पटना विश्वविद्यालय से पास किया है तो कोई अच्छा काम करेंगे। ये छूतों के यहाँ रहते हैं और शौचालय की बात करते हैं। लोग पूछता है दामाद क्या करते हैं, तो मैं क्या कहूँ दामाद क्या करते हैं हमारा। कहा कि अछूते के साथ रहते हैं, यही कहे हम लोगों को। हम ब्राह्मण्स नहीं होते तो बेटी की शादी दूषित कर दी होते। तो जब पुरस्कार मिला था हम लोगों को गांधी पीस प्राइज़, तो हमारी राष्ट्रपति जी ने पूछा हमसे कि आपकी पत्नी कहाँ है। हमके उस रूम में है, यहाँ तक अवार्डी सिर्फ हैं। बुलवाया उनको, फ़ोटो खिंचवाया और कहा कि देखिए यदि आप शादी से उस समय नहीं करते, बाद में उनकी शादी नहीं होती। उसके बाद जब 2 अक्टूबर 2022 को अपने कैंपस में गए, जब देखा 1 घंटा के लिए आए थे, 2.5 या 3 घंटा के बाद गए। वहाँ हर आदमी आता है 20 मिनट के लिए, 25 मिनट के लिए, घंटे के लिए। तो 3 घंटे का जब जाने लगे, फिर पत्नी को बुलाया उन्होंने। अब गाड़ी पर चढ़ रहे थे उस समय, लगता है दिमाग बात आ गई इनको। तो फिर उतर करके फिर हमारी पत्नी से बुला के इधर सुनिए, आज जो देखा ना हमने कैंपस, लगता है ये सब जान के आपने शादी की थी। तो संस्कृति बस शौचालय का विषय इतना लो स्टेप पर था, लो रंग पर था। आज हमारे कल्चर में वो टॉप प्रायोरिटी पर आ गया है। हर आदमी अब शान समझता है कि हमने 4 शौचालय बनवा दिए, हमने 6 शौचालय बनवा दिए, हमने 1 करोड़ बनवा दिए, हमने 11 करोड़ बनवा दिया। अब हर आदमी शान से कहता है शौचालय हमने बनवाए। और पहले था हिंदी कैसा, पर कल कहा था कब याद नहीं पड़ रहा। तो पहले हिंदी कैसा, ऑनर्स किस में आपका है,
छोड़िए ना, छोड़िए न, बस बताइए ना किसी ऑनर साहब का है, अरे छोड़िए ना, 5 बार जब उसको कहिए हिंदी में है नहीं, जैसे हिंदी में ऑनर्स होना सबसे निकृष्ट काम हो, है नहीं। तो उसी प्रकार से शौचालय में था, जिसके यहाँ जाए, हाँ शौचालय वाले आए थे, ऐसे अभी भी लोग शौचालय वाले कहते हैं। तो शौचालय की प्रतिष्ठा कितनी हो गई, और उससे जुड़ी मेरी अपनी प्रतिष्ठा, है नहीं। तो ये महत्वपूर्ण है कि जो पेपर प्रेजेंट किया इन्होंने, उसका सार है कि कल्चर जो है सैनिटेशन का, जो कल्चर बदल गया। जो पहले हम कह रहे थे कि जो पोल्यूशन था वो प्यूरिटी बदल गया। वो इन लोगों को जो महिलाएं बैठी हुई हैं, अब राजकुमारियाँ और ब्राह्मणी हैं सब, ये सब जो बैठे हैं, पहले ये घर के पीछे दरवाजे से जाते थे शौच साफ करने के लिए, शौचालय साफ करने के लिए पीछे से जाते थे। अब ये आगे से जाते हैं, आगे से नहीं जाते हैं, किचन तक जाते हैं, मैडम का फेशियल करते हैं, और मैडम कहती है पहले चाय बनाओ, पहले हमको पिलाओ, तुम अपने पियो और तब फेशियल करो। कभी कभी नाश्ता भी कराती हैं, अपने वही थाली में खिलाती हैं जिसमें वो खाते हैं, उसी गिलास से पानी पिलाते हैं जिसमें पहले तो सवाल उठता था पिलाने का, जो अब पानी पिलाते हैं उसी गिलास में जिसमें वो अपने पीते हैं। इतना बड़ा अंतर कल्चर में, क्यों कल्चर का पेपर है ना ये। तो संस्कृति में इतना बदलाव हो सकता है 50 वर्ष में, कोई सोच ही नहीं सकता है। गुप्ता साहब भी पेपर प्रेजेंट कर रहे थे, बहुत अच्छा पेपर उनका भी है, तो उनसे तो अलग से बात करनी पड़ेगी बैठ करके। तो कहने का मतलब ये है कि संस्कृति का जो बदलाव है नहीं। इतने कुछ आदमी तो हो गए थे, श्यामलाल जी भाइस चांसलर बने 3 विश्वविद्यालय के, जोधपुर के, जयपुर के, पटना के ही बने। और भाइस चांसलर लोग की बात आई तो हम नाम तो नहीं लेंगे, न भाइस चांसलर का नाम लेंगे और न उस नेता का नाम लेंगे। तो वो IAS थे भाइस चांसलर। तो एक हिस्टोरियन थे, हाँ यूनिवर्सिटी के, नाम नहीं लेंगे, प्रोफेसर थे वो भी। तो कहे कि भाई कैसे चलाओगे, यहाँ तो बड़ा मुश्किल होता है, ये तो लड़के सब ये हो गए हैं। कहे नहीं हम तो IAS अफसर हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम तो जीप पर जो है वो किताब रख के पढ़ते रहते हैं और सब लोग लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करता रहता है। हम लोग को आदत है हजारों की भीड़ में बैठ करके जीप पर किताब पढ़ने का, और लोग अपना काम करते रहते हैं, ठीक है। तो एक दिन गए, सच्ची कहानी कह रहे हैं लेकिन नाम नहीं ले रहे। तो वो गए एक दिन भाइस चांसलर साहब के यहाँ, ये श्यामलाल जी के पहले भाइस चांसलर थे। तो IAS तो वो नेता जो है, वो भाइस चांसलर साहब जो है कुर्सी घुमा के अपना फाइल कर रहे थे। तो कुर्सी ऐसी होती है ना, तो कुर्सी घुमा के अपना वो फाइल कर रहे थे। और जो नेताजी थे उनके टेबल पर दोनों पैर ऐसे रख के बैठे हुए थे। तो वो गए तो बोले अरे तुम क्या कर रहे हो, हाँ तुम वहाँ पर रखे हुए तुम पैर भाइस चांसलर के टेबल पर। अच्छा आप कहते हैं तो हम पैर हटा लेते हैं, ये तो इसी के लायक है। ये मैं उस विश्वविद्यालय का विद्यार्थी रहा हूँ। जब हम निकलते थे, जब वाइस चांसलर साहब, क्या रुतबा था वाइस चांसलर का, और जज जैकब थे वो, उनका नाम लेने की दिक्कत हमको नहीं है। जज जैकब निकल जाए, किसी कॉलेज में चले जाए यदि, तो सबके स्ट्रिक्ट गुप्त। और एक वाइस चांसलर थे सारंधर सिन्हा, बहुत पहले पटना विश्वविद्यालय में, पटना में 50s में। तो एक ICS थे JC माथुर। तो वो जब सीनेट की बैठक चल रही थी तो उसमें 3 बार कह दिया उन्होंने कि सरकार इस बात को नहीं मानेगी।
तो उन्होंने कहा कि मिस्टर माथुर, कैन यू गो फ्रॉम दिस मीटिंग? और वो मीटिंग छोड़ के चले आए। और श्री बाबू को उन्होंने फ़ोन किया कि कैसे कैसे अफसर को भेज देते हैं हमारे यहाँ मीटिंग अटेंड करने के लिए। और उनसे कहा था माथुर से, माथुर यू आर एडवाइजर टू द गवर्नमेंट, यू आर नॉट द गवर्नमेंट, तो हाउ डू यू से कि सरकार बात नहीं मानेगी, सरकार बात नहीं मानेगी, यू आर नॉट द गवर्नमेंट। ये गट्स था वाइस चांसलर का साहब। लेकिन ये श्यामला जी वाइस चांसलर बने, प्रतिष्ठा के साथ रहे और प्रतिष्ठा के साथ आए, इनको कोई समस्या नहीं हुई। तो ये महत्वपूर्ण बात है कि अब 7 बजे पहुंचना है आपको जहां डिनर होना है। और कल जो है अनाउंसमेंट ये लोग करना था, हम ही कर दे रहे हैं। और कल जो है आपको हम लोग का ये हॉल को कल 5 बजे छोड़ने का है। 5 बजे तो होगा ही नहीं, तो अब लंच तक पे और छोड़ना है। अभी लंच में कैसे होगा? तो मावलंकर हॉल में हम लोग का रूम बुक किया हुआ है। तो ये हमारे जो लोग हैं और हम में अंतर है। तो वो सब कह रहे थे कि भाई ये तो ले लिया है तो उसको क्यों छोड़ देते हैं, इतना पैसा लग रहा है। कि छोड़ो नहीं, हम जो मैं कहता हूँ करो। अब होता है कि एडवाइजर लोग बार बार माथे में कुछ कहे तो आदमी अंत में कहे जाओ जो करना से करो तुम। लेकिन हम सोचे कि नहीं, ये सब तो उतना सोच नहीं पाते हैं बात को, और ये समस्या आ गई। अब यहाँ पर कहता है कि 5 तारीख को जो है 5 तक का बुक था हमारा, कहा कि 5 को तो नहीं होगा, 4 को 5 बजे खाली करना पड़ेगा, इस लोग क्योंकि प्राइम मिनिस्टर का प्रोग्राम शायद है। तो खैर हम छोड़ा नहीं हमने। तो एक और बात कह के ख़त्म कर रहे हैं कि MC गुप्ता, शायद कल उनका आना है, शायद आज हैं। तो पहले चीफ सेक्रेटरी, हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी रिटायर किए MC गुप्ता, तो उसमें अर्बन के सेक्रेटरी थे। तो उनको बिहार में आना था, 83 की घटना है ये, बिहार में आना था उनको। तो हर दम उनका टेलीग्राम आ रहा था, सर्किट हाउस, सर्किट हाउस, सर्किट हाउस। हमको गवर्नमेंट सेक्रेटरी बुलाया कि भाई वो आ रहे हैं, तो कैसे क्या होगा, सर का रहने का तो कर दिया गया है सर्किट हाउस में, जहाँ आप देखभाल कर लीजिएगा। हम ठीक है। मैंने देखा कि हरियाणा का IAS है, ये आदमी बिहार के रेस्ट हाउस में, सर्किट हाउस तो नहीं रहेगा, निश्चित नहीं रहेगा। तो हमने मौर्या होटल वहाँ पर है, तो 2 रूम उसमें हमने बुक करा दिया उन लोग के नाम से। जब एयरपोर्ट पर गए रिसीव करने के लिए, तो जो हेड क्लर्क था सेक्शनल अफसर, वो गया रिसीव करने के लिए। पूछा कि आप कौन हैं? तो बोला कि हम सेक्शनल अफसर हैं। तो बड़ी डांट लगाई उनको। हाँ, क्यों आ गए आप रिसीव करने के लिए हमको? पाठक जी तो है ही थे, सेक्शनल अफसर आ गए। कहा पाठक जी कैसा गवर्नमेंट आपका है, बताइए। सेक्रेटरी हम गवर्नमेंट के हैं, हमारे लिए सेक्शन को भेज दिया है रिसीव करने के लिए। खैर बात ख़त्म हो गई। गए सर्किट हाउस में, हम लोग है कोसी रेस्ट हाउस। नीलतन जी तो वहीं पटने के रहने वाले हैं, इनको पता है। तो गए कोसी रेस्ट हाउस में, तो जैसे ही उसका जो था ना, क्या कहते हैं, नेट होता है ना, क्या कहते हैं उसको, मॉस्किटो, मच्छरदानी हम कहते हैं। मच्छरदानी जैसे उस आदमी ने ऐसे किया, 1000 मच्छर स्वागत के निकल गया उसमें से। 1000 मच्छर जो है, अब गिनने तो हो रहा है, हम तो अंदाज से कह रहे हैं आपको। 1000 मच्छर जो है दोनों अफसर के देह पर लिपट गया स्वागत करने के। तो उनको गुप्ता साहब ने कहा जिनको पूछना हो तो पूछ लीजिएगा आप लोग। तो गुप्ता साहब ने कहा कि पाठक जी क्या ही रहना पड़ेगा, कोई इंतजाम आपने नहीं किया है? सर हम तो कोई इंतजाम नहीं किए हैं, क्योंकि आप तो सर्किट हाउस लिख रहे थे, हम सोचे आप गवर्नमेंट के IAS अफसर हैं, आप कहीं होटल में रहेंगे कि नहीं रहेंगे। सर होटल तो एक अच्छा है, वहाँ पर चल सकते हैं। तो चलिए, तो वो छोड़ के आ गए मौर्या होटल में। तो रिसेप्शन जो होता है, पूछा कि आपका आरक्षण है? बोला नहीं आरक्षण तो नहीं है, लेकिन 2 रूम हमको चाहिए, हम हमारे डायरेक्टर हैं। तो हाँ सर, रूम तो मिल जाएगा। तो जो अपना नाम भरने लगे वो MC गुप्ता, तो सर आपका रूम तो बुक है यहाँ पर। कौन बुक किया?
तो हम तो पीछे खड़े थे। बोले पाठक जी ने बुक कराया आपके लिए। तो हंसने लगे वो। करे पाठक जी कहे नहीं है। हम सर नहीं कहे डर से हम, क्या पाइए सब सर हैं और सर के ठाव सब लिख रहे थे, कहीं डांटिए ना हमको, इसलिए हम नहीं कहे थे। 3 दिन रहे तो कहेंगे पाठक जी काहे के सुलभ चला रहे हैं आप तो मल्टीनेशनल कंपनी के चेयरमैन हो सकते थे। तो मैनेजमेंट हमने पढ़ा नहीं हम तो, लेकिन मैनेजमेंट का प्रिंसिपल है कि ऑलवेज कीप सेकंड। 20 रुपया शादी ब्याह में लग दिया, 1 करोड़ का तिलक दिया, 2 करोड़ का सम्मेलन करा दिया, सब कुछ कर दिया, और जनरेटर रखा एक। अब सब में खर्चा खूब किया, और जनरेटर सब एडवाइजर ने कह दिया ना सर एक एडवाइजर काफ़ी है, 2 का रखिएगा, पैसा बर्बाद जाएगा। तो कहा ठीक है। उसमें हवा चली गई, उसमें डीजल इंजन में प्रवेश कर गया, वो बंद हो गया। अब अफरा तफरी हो गया, अरे लाइट बंद हो गया, लाइट बंद हो गया, लाइट बंद हो गया। है नहीं, हम जब करते हैं तो 1-2 रखते हैं हरदम जनरेटर, ताकि एक बंद हो दूसरा चालू हो जाए। तो मैनेजमेंट का प्रिंसिपल है कि ऐसे कि 2 रखना चाहिए। अब मैनेजमेंट का दूसरा प्रिंसिपल है कि आप अफसर यदि हैं, आप सीनियर आदमी हैं, तो अपने जूनियर को हरदम अपने रूम में मत बुलाइए। यदि 5 बार बुलाना हो तो 3 बार उसको बुलाइए और 2 बार अपने चले जाइए। यदि अपने चले जाएंगे तो उसके अहंकार की तुष्टि हो गई और आपकी प्रशंसा करेगा कि साहब बड़े अच्छे आदमी हैं, साहब अच्छे आदमी हैं। जो साकेत साहब हैं चाहे कि चले गए, हाँ, तो साकेत कुशवाहा जो हैं वो ऐसे हमको पर्सनल अनुभव रहा है, उनका है वो स्वभाव उनका है। तो कहने का मतलब है कि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल में ऑलवेज 2 खोजता है और सबमिसिव खोजता है। जो अफसर और जो बॉस सबमिसिव होकर रहता है उसकी प्रशंसा होती है, और जो एरोगेंट होता है, कुछ नौकरी का भय होता है तो मुंह पर नहीं बोलेगा, पीछे जरूर बोलेगा। तो मैं तो नौकरी बहुत दिन किया नहीं, लेकिन 5 रुपये रोज़ पर 1 साल काम किया हमने। विजिलेंस अफसर के लिए गए थे तो हुआ नहीं। तो हमारे अफसर थे, एससी थे हेड, तो उनको हमारे असिस्टेंट इंजीनियर थे सलमान साहब। तो हम लोग को डांट फटक तो करते ही थे, इसलिए हमारे साहब थे बड़े साहब। लेकिन सलमान साहब जो है उनको, सलमान साहब आप गधे हैं आप, कि जी सर। सलमान साहब आप बेवकूफ़ हैं, जी सर। तो हर बार जितना उल्टी बात हो सकती है कहते थे उनको, असम में जी सर, जी सर। तो जब चले जाए बॉस हमारे हम लोग के, तो हम लोग के सलमान साहब ने वो गधा कह दिया, बेवकूफ़ कह दिया, आप हक जी सर जी कह रहे थे, तो क्या कहते हो, नौकरी छुड़वाओ क्या तुम हम लोग को? तो वो लोग हमारा नौकरी छुड़वाओगे क्या? और साहब का काम है, साहब बोलते हैं हम ना गधा हो गए ना हम बेवकूफ़ हो गए, हम जो है सो है ही है, हम गधा हो गए तो नहीं। तो बॉस का काम है बोलना, अपना बॉस बोल चला गया, क्या बात लगती है इसमें। तो ये है कि नौकरी में करने का जो सबॉर्डिनेट और सीनियर का जो होता है, ये वो तो खैर हम समझ बात छोड़ देते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए, और इनके साथ तरफ से, चेयरपर्सन की तरफ से, नीलरतन जी की तरफ से, सब लोगों की तरफ से आपको हम धन्यवाद देते हैं। आज का कार्यक्रम ख़त्म है। अब इंडिया इंटर सेंटर में डिनर है, वहाँ चलिए। मैं तो पहुँच जाऊँगा पहले, जो गेस्ट के पहले होस्ट को रहना चाहिए, नहीं तो होस्ट ही गायब रहेगा तो मुश्किल होगा। और कल जो है वहाँ पर जो मामलंकर हॉल है, तो आपकी गाड़ी जितनी सा आप लोगों की है सीधे आपको वहाँ ले जाएगा, वहाँ कार्यक्रम होगा, अब यहाँ नहीं होगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। 10 बजे, कल 10 बजे, 9 बजे थोड़ा सा अर्ली हो जाता है। कल 10 बजे ठीक है, 10 बजे चले हो जाएगा, ठीक है ना? ठीक है, तो अब यहाँ समाप्त हो रहा है, तो जनगण मन थोड़ा कर दीजिए। उसके पहले कि हम लोग का अपना एंथम है सुलभ का,
ये 1.5 मिनट का बजेगा जी। हाँ हाँ, आप शांत हो जाइए। तो एक हम लोग का भी अपना एंथम है छोटा 1.5 मिनट का, उसके बाद नेशनल एंथम होगा, लेकिन उसमें भी खड़ा रहना पड़ता है। चलिए शुरू करिए। सुलभ सूर्य है, सुलभ चंद्र है, सुलभ है सारे तारे, सुलभ धरा है, धरा भरा है, रंग है इसके न्यारे, जीव जंतु है, पशु पक्षी है, नर नारी है सारे, रंग बिरंग के फूल खिले हैं, धरती पंख पसारे, पर्वत जंगल नदियां बहती करती एक इशारे, आओ आओ मिलके चले हम दूर देश के प्यारे, प्रेम का गीत चलो हम गाएं, दुनिया में खुशियां हम लाएं, रंग भेद व ऊंच नीच को कर दे दूर किनारे, धरती को हम साफ रखें, सुंदरता का दीप जलाएं, धर्म संस्कृति मानवता का दुनिया को हम पाठ पढ़ाएं, दुनिया को हम पाठ पढ़ाएं, साफ रखो और सुखी रहो, साफ रखो और सुखी रहो, इसका पाठ पढ़ाना है, सबको गले लगाना है, सुलभ संसार बसाना है, सुलभ संसार बसाना है, सुलभ संसार बसाना है। चलिए दूसरा शुरू करिए। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा, जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे, जय 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 हे। आप कहें कुछ बोलना आपको? भारत माता की जय, भारत माता की जय। धन्यवाद।